First case of virtual gang rape reported in metaverse, investigation underway. There are millions of money in metaverse. They are calling it metaverse scam. Big amount of your real money is involved in metaverse. How is that going to happen? We'll see. India's first metaverse wedding had 500 guests and 2 brand associations. How is that happening? The metaverse is making sure that you have real-time experience. I want you to just imagine that. आपने देखा है मॉल में बच्चे VR AR लगा के लड़ाई कर रहे होते हैं and they feel that they are fighting real battles. They are fighting real enemies. Have you seen it? Yes. They look off, right? And I'm sure while I was researching on metaverse yesterday and how this finance sustainability thing works, I felt like I'm playing a video game where nothing is real, but at the same time, everything is at stake. And what is at stake? Your involvement. Yes. How is that happening? I'm in my virtual world. And how is metaverse happening? Because of artificial intelligence. There is virtual reality, there is augmented reality, and what is all that? Virtual reality is something that is not real. It's a totally different world. Augmented reality is something that is enhancing your perception about life. Yeah, and it could be anything. आपने देखा IKEA में आपको फर्नीचर लेना है कि नहीं लेना है, आप उसकी फोटो लेते हो और that is visible. Yeah, so augmented reality could be anything. Now, what metaverse is doing is, it is enhancing your experience and taking your experience to some next level. So much so that you feel that you are very much a part of it. So for example, taking this criminal case, suppose there are 700 subscriptions to a metaverse and there are, just take an example of this wedding, 500 people are involved, they are invited. Something happens, I have my avatar, rest, everybody else has their digital identity, and we all are a part of it. And if something happens, especially as grave as a sexual offense, do you think it is only limited to physical? Doctors are talking about it. It is going to have a long-lasting psychological effect. It is going to scar the victim in the most grave way. Yes, so your physical identity is no more restricted to the physical space. We have people, I think we students have joined us on WebEx, and there are other online portals where we are all on the same platform, right? So why I'm discussing this is to understand what is metaverse, because only when we know what is metaverse, we'll be able to discuss the finance sustainability in metaverse. We had a very good discussion yesterday where we saw how dark web works and what are the problems in the dark web. How are we going to discuss Bitcoins, and this is just one of the currencies of blockchain technology, so on and so forth. But today what we are going to see is what are the possible problems. See, because when we are talking about metaverse, right? When we are talking about blockchain technology in this universe, in our physical world, it is a tricky thing, yes or no? We are talking about metaverse, which is quite unreal to a very great extent. So it might seem imaginary to some extent for some time, but it will, I hope in the end, it will all make sense. Okay. There was this report by IBM that said by 2030, we could be spending more time in metaverse than in the real world. People will be applying for jobs, earning a living, meeting with friends, shopping, even getting married. It is happening already, yes? Now, this is tricky, and this is important. When we say people are investing in metaverse, yeah, they have their own crypto. And when you say, so investment can happen on 2 levels in metaverse. Either you are investing in the business of metaverse, which is happening on the physical level, right? You are doing your normal transaction, real money is involved. And the second level of transaction that can happen in metaverse is if you have
your identity. For example, I choose to be in metaverse after 3 p.m. 3 p.m. to 9 p.m. is my metaverse world. It can happen, right? Real reality is anyway getting boring. So we want to explore new things. Okay. So let's say this is a real case, a boy enjoys doing everything in metaverse more than in his real world. So he has this gadget in front of his eyes, and all the time he's just, watching his favorite show in the metaverse, right? Because he has his own world. He likes to even rest in metaverse. Everything is happening through the ability of his mind and the technology that is helping him out to do that. And the experience is more real than real. Yes. So when we talk about finance sustainability, or for that matter, let's just break it down into two things, finance and sustainability. When we talk about finance, how is money involved in metaverse? आप आंखों में लगा के कुछ भी करो, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? But when you become a citizen in the metaverse world, you need money for transactions. And what is this money going to be? Is it going to be real money? 5 rupees, 10 rupees? No, it is going to be coins, tokens. Yes, blockchain. I mean, blockchain is a technology that works behind these tokens, but let's talk about tokens, because I'm sure today we are going to have really interesting discussions on what these tokens are, what is deepfakes, and how is AI coming into this picture. There's a very interesting case study. What happened, deepfakes, right? Rashmika Mandana, this actress from South, her deepfakes were made. And so there were a lot of studies going on. Researchers were working hard on to identify how to identify deepfakes. And this was seen that there were a lot of discussions about how to identify deepfakes. And somebody wrote an open research as to how to identify deepfakes. And they said if your eyeballs are moving in a certain way, it can be seen that this is deepfake and this is real picture. Just after a month or so, new deepfakes were there with new technology, and there were no problem with the eye blinks and eye movements. That means what? The criminals are smarter than us. So they suggested that we should patent this technology. Yes. How is artificial intelligence going to help? Because deepfake is artificial intelligence. When we connect artificial intelligence with crypto technology or blockchain, the only purpose of artificial intelligence, and for that we need to understand what artificial intelligence is. We'll be coming to that in a while. But essentially, the purpose of artificial intelligence is to make the system more transparent, more secure. Because like I was asking this question yesterday, it's all about our data. I don't care about technology as much as I care about myself. I don't want my personal details to be out there in public. I need security for that. Of course, we have Data Protection Act. Of course, we have other right to privacy, as so to say. But are we actually implementing it is the question. But how are we going to do that in a world like metaverse? Okay. We have Bangalore Airport on metaverse. By the way, there was this recent news where Daler Mehndi had his concert in metaverse, and people actually bought tickets, real-time money, and they attended his concert in metaverse. Now, you see how this layer is getting thinner and thinner? Your personal experience and your experience in metaverse, they're getting blurred. Yes, when you have an audience, I don't mind having a class in metaverse. Why not? We can all wear a this gadget and have a class. It is going to be more experiential. Okay. So this is what it is. What is blockchain? Of course, it has been discussed extensively. I didn't want to repeat it, but just for the sake of this class, we'll just quickly go about it again. Blockchain is a book. Yeah, and pages are the block entries that cannot be erased. Okay, and every transaction, everybody has a copy of this transaction.
That means everybody is aware of this transaction. So the numbers are traceable, but the identity is not. That is where AI can help. Yes. So, and how is AI connected to blockchain? But why am I emphasizing on AI a lot more today? Because it is going to be a solution for finance sustainability. Let's talk about finance sustainability. What is sustainability? We have understood this term in terms of environment. Yes. What is sustainability? Anybody? Anything that could be preserved for a long time. Okay. Anybody else? Any process that can continue for a long time. Yes. So that means we are spending or we are doing something for our own benefit, keeping in mind the interest of our future generation, so that we don't use all the resources today and there's nothing for our future generation tomorrow. Yes, that is sustainability, to put it short. That means there has to be a balance between our need and the process that happens in the environment. Finance sustainability is what? We have RBI, we have SEBI to regulate our money. And even if the Pani Puri wala is not paying GST, we know that the money is ultimately going to be circulated in the market. Yes. And as long as there's no major hack, nothing is going to be problematic. But let's say if I'm investing my money in some universe that has no RBI, there's no SEBI. How are you, or how is RBI going to regulate that money? So with the help of AI, we have an RBI or SEBI in metaverse? I say, why not? Why not? Okay, so basically when we are talking about finance sustainability, is to maintain the balance that we already have in the physical world, and which is kind of getting disrupted because of currencies anyway. Because cryptocurrency is what? It has a value. It's a token that has value. Yes. But what is its value? If you have more subscribers, the value increases. So it is on subscription basis. But what is the value? We don't know. It's a market that can crumble down anytime from the lens of security, and we would not even realize it. We saw so many scams yesterday, that was discussed by our faculties, wherein one person was investing and keep on investing in one of the currencies, Bitcoins. And there was this female from South Korea. Do you remember that case study? Yeah. And she lured him to invest in that currency more. And when he wanted to withdraw, it demanded even more money. And the moment he made that payment, the site was blocked. Yes. So of course, multiple people have multiple businesses, and we have Finance Act 2022 that says you need to pay tax. Yeah, if you're getting into this business of cryptocurrency, you better pay tax. How is it going to benefit us? We are going to have registrations. We will know eventually who is subscribing to this business, and we have some transactional details. Yes. So crypto is nothing but a token money. It has an imaginary value, like I said, and the more there is subscription, the more value there is. So just to cut it short, it's a digital ledger that records and verifies transactions using network of computers and provide data immutability. Your data is secured, right? So even if there is any level of manipulation, it will be known. But are there no manipulations? There are. That's why we are studying this concept today. Yes. Oh, why? By the way, there are questions whether AI can replace judges, and blockchain is the answer. We were doing our intensive research as to whether we can have AI in our legal system. इतने लंबे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने पड़ते हैं, उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या चीजें हैं,
there is one ambiguity in the contract, the litigation will go on for years. Yes. Now, of course, after we secured some good rank in ease of doing business, there are some changes in the law where if it is related to infrastructural projects, contracts have to be seen in a lighter way. But can we use this technology in court, or can we replace police with AI? Just imagine you wearing your uniform and AI assistant working with you. And somebody said yesterday that we can have AI, but by having human in the loop. So what is this blockchain technology? You know that there are certain informations that are very crucial in a case. Yes, and that has to be secured. So if I am confiding in somebody as my lawyer, if there has to be AI in the loop, I want to make sure that my data is secured, my information is secured. You know, there's something called privileged communication. आपके सामने lawyers आते होंगे, वो बोलते होंगे नहीं, मेरा जो client है, मुझे पता है उसने क्या किया, वो but कभी बताएंगे नहीं आप. And it is protected by law because it's a privileged communication. Yes. How do we make sure that an intelligence which is artificial can imitate our intelligence? Because we are not just science and maths, right? We are emotional beings. There is an emotional intelligence quotient that is working towards it. How would we make sure that that happens? When there is blockchain, when my data is secured through a technology that is blocked in a certain way. The information is not going out. Because there are many confidential information and confidentiality issues that come in a legal affair. So how are we going to plant this blockchain and finance sustainability in metaverse? So we'll see. Just before that, we'll just quickly see what is artificial intelligence. Just put it short so that you understand how is blockchain and AI working together. AI is nothing. See, in any computer program, there's input and there's output. Yes, we understand that. I'm writing something and there's an output to it. Now, the middle step is algorithm. Algorithm is nothing but a set of instructions. Cake banane ke liye recipe chahiye hoti hai na? वैसे ही एक recipe hai, algorithm. So, what is now when we talk about having AI in blockchain to have financial stability or sustainability in metaverse, considering that this technology is working the best, what is the problem? Why can't we not talk about finance sustainability in metaverse having AI along with us? I told you it's a double-edged sword. How? You know, this Amazon has this Amazon's automated inventory management. So when COVID came, all of a sudden, everybody was ordering masks and sanitizers. Yeah, all of that. The algorithm crashed. Amazon's algorithm crashed. It got confused. It did not know what to do because this inventory management, it is working on predictive algorithm. आपने Netflix देखा होगा या YouTube देखा होगा, Facebook आपको वही दिखाता है जो आप चाहते हो. क्यों? Because it is working on a predictive algorithm. It is predicting your behavior. And how is it doing it? Because this technology is based on machine learning or deep learning. अरे बहुत heavy terms है. What is machine learning? Nothing. Just a part of artificial intelligence. Just a more advanced form of artificial intelligence. These are all subsets of AI. So what is machine learning? It learns from you, the machine that learns. So for example, I am told that I have to give lecture today. If I am a machine, और आपने चैट जीपीटी में कभी ट्राई किया है? सैमसंग वालों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी अभी रिसेंटली. उन्होंने क्या किया, मिडनाइट ऑफ द मीटिंग्स उनको रिकॉर्ड करनी थी, उन्होंने एआई की हेल्प ली. अब सैमसंग का खुद का एआई अभी नहीं है, राइट? आपको चैट जीपीटी क्या बोलता है? जैसे ही आप कुछ लिखते हो, do it at your own risk. Whatever you are giving to us is going to be an input for us to improve our system. Yeah. So whatever output is generated, it is going to be an input for that machine to learn even better. We are all machines that way, yes or no? Since childhood, we have been learning something, and of course, parents imposed us on certain things. We develop like that.
Same as with machine. It learns from its environment. And this is called reinforcement technology. So the AI is working on reinforcement technology. It is working from its own environment. Okay, your Siri, your Alexa, you talk to Alexa, the more you talk to Alexa, the better it gets. Why? Because it is predicting your behavior. How are we going to use it in finance sustainability, in metaverse? I want you to imagine this. There's a blockchain technology. Yes, it looks quite secured. But what if there's a hack? Because we know hackers are smarter than us. What to do? There is a hack. And there is some sort of manipulation in that blockchain technology. If we are going to come up with a solution, it is going to take time. And by the time we fix the manipulation, the damage must be done. How are we going to use this machine learning to stabilize this financial structure that we create in metaverse? This AI, can anybody make a guess? Somebody who's from technology? Yes? कैसे guided बनाना पड़ेगा? Algorithm? हाँ? Okay. Basic change करेंगे. क्या हम ये बोल सकते हैं उसको हम और एडवांस ऐसा बनाएं कि वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करे कि ऐसे साइबर थ्रेट्स आए हैं, ब्लॉकचेन में मैनिपुलेशन करने की कोशिश करी गई है पहले, और क्योंकि पहले करी गई है और इट वर्क्स ऑन रीइंफोर्समेंट टेक्नोलॉजी, इट ऑलरेडी नोस. वायरस में, कोविड में भी तो हमने यही किया. वी प्रिपेयर्ड आवर बॉडी फॉर दैट वायरस, so it creates a defense mechanism already, and that is what is being done by this technology. By the use of artificial intelligence, what we can create a system that can predict such kind of threats already. So if there is going to be any sort of manipulation in the blockchain technology, if this blockchain technology is coupled with machine learning, so to say, it is going to be a more secured system, क्योंकि उसको already पता है क्या आने वाला है, because of the experiences it has had in the past. That is where this technology plays a very important role. आपने ये देखा ही होगा कैप्चा, सबने देखा है? You know, the system is training itself. आपने देखा होगा उसमें लिखा आता है कितने ट्रैफिक लाइट्स हैं, और आप बताते हो ये ट्रैफिक लाइट है, आपसे होमवर्क करा रहा है वो अपने आप को ट्रेन करने का. You know that? You are, in fact, there was a beautiful documentary on Netflix regarding AI and Netflix. So it said the technology is not feeding on your money. It is feeding on your sleep. It is making you addictive to a technology. And if you are not if you are not providing the data, you are the data. How? Because you are constantly and continuously training that machine. It is getting a personalized view of who you are, and that is how it is working the best possible way. आप Netflix खोलता खुलता रही, मैं तो यही तो मैं ढूंढ रहा था, मिला कैसे मुझे? Because it is predicting your behavior. Of course, it can be a very useful thing when you're predicting a scam or cyber credit card scam में AI is being used in a very extensive way. The same thing can be done in a blockchain technology as well. But what is the problem with this technology? Huh? Okay, identity is hidden maybe with the help of deep learning. आपको पता है deep learning artificial neural network से बना है. जैसे हमारे सिस्टम में एक न्यूरल नेटवर्क है, राइट? हम टच करते हैं, वो जो मैसेज है वो माइंड हो जाता है. द सेम न्यूरल नेटवर्क is working in artificial intelligence space also. So when we say what is the problem with this AI, see, any machine is structured by a human being. मैं ही तो एल्गोरिदम लिख रही हूँ ना, कोई तो लिखेगा एल्गोरिदम. आपको पता है यूएस के हेल्थ केयर में बहुत डिस्क्रिमिनेशन है between blacks and whites. The kind of treatment, because they have this AI technology in the healthcare system, and the only data they had was of whites. तो वो whites की प्रॉब्लम को तो प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, बट क्योंकि blacks का इनपुट ही नहीं था, there is a kind of discrimination. Blacks are more, when AI is used in the criminal justice system,
AI predicts that black is likely to commit crimes more than white. Why? Because the training data set that is being fed in algorithm is corrupted by our own biases. And there are multiple, let me tell you, there are multiple level of biases in algorithm, from training data bias to interpretation bias. हमें लगता है ना मशीन ने किया सही होगा, एक इंसान को कैलकुलेशन कराओ और मशीन को कराओ, चलो कैलकुलेशन इज अ डिफरेंट थिंग. Yes, but there is a inherent bias within all of us. So the smartwatch that you are wearing, or especially अगर हमने चंद्रयान देखा था, Chandrayaan used AI technology. So why I'm telling you this is important, please pay attention. What AI essentially does is, or this machine learning does is, it takes up a data and this algorithm is analyzing this data, and this analysis, after this analysis, it is predicting an outcome. It's a 3-step process. Yes? Are you all with me on this? It's a 3-step process. Now, when we talk about blockchain technology, or for that matter, this Bitcoin system, or it has sandbox system in metaverse, they have their own currency. अलग ही दुनिया चल रही है, which is good, right? So when we want to detect a cyber threat, सबसे पहले क्या करना होगा? We have to analyze it. And we were talking about quantum computing, all of that. What is it doing essentially? It is increasing the speed. अब यहाँ पर crime हुआ है, और जब तक हम पहुंचे सारी चीज हो जाए, उसका क्या फायदा? We need a system that is quick, which is better than humans. So the analysis of data is happening at such a great pace that by the time the threat, what happened? I think, oh, it's fine. So by the time we are, Anya, by the time we realize what is happening, the damage is done. Okay, we have, so this algorithm is working like that. So when we have this algorithm system set in blockchain technology, it can predict cyber threats at a much metaverse, right? So are you all clear with what is metaverse? It's a virtual reality, and this is done through augmented reality and virtual reality, which enhances your perception about the life that is there in metaverse. So I want you to have a plot in metaverse. You have a land. लोग तो चांद का टुकड़ा भी खरीद रहे हैं, है ना? वो एक कहावत है ना कि अभी चांद से परे भी एक दुनिया और भी है, वो मेटावर्स की बात कर रहे हैं. And multiverse, by the way, not just metaverse, there are multiverses. There are many more things beyond that as well. So I want you to have a land on metaverse, and this is what sandbox is, if I am not wrong. You can buy property, you can sell property, you can have whatever you want to buy a car, you can buy a car. But for that, you need some kind of token. What is that token? This is exactly what we are talking about. वहां पे अगर साइबर थ्रेट आ जाए, आपके सिस्टम को हैक कर लिया जाए, because we know how easy it is to create one identity, right? Public key, private key, we all saw. सर ने बस एक माउस घुमाया और आपका एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट हो गई. Yes? So there are two problems associated with it. We saw how in dark web we can have transactions. क्या क्या चीजें बिक रही थी वहां पे, right? And you can do these transactions by way of these coins, right? Which is not a real currency. This could be one thing. One of the biggest problem of such thing is money laundering. You know what is money laundering? Converting black into white. How do you do that? When you have such coins, you're investing these coins in, let's say, metaverse technology or something that is there in that multiverse or universe. It gets a white identity to it, right? Because we do not know the source.
We know how many people are owning it, but we do not know the source, right? So in the sandbox metaverse, which is a virtual gaming world built on blockchain technology, it allows players to buy, sell, create digital assets. So you have digital assets, which is different from the assets that you already own. So for that, we need a system that can identify such assets. First of all, trace its identity, and second, to ultimately analyze the procedure as to how to go about it if there are any threats in future, because it is going to be getting more complicated. Yes, we talk about getting to 5 trillion economy, this and that. Why? Because there's a regulatory framework and these are identifiable money. हम जीएसटी पे करते हैं, सब कुछ हमारे रिकॉर्ड में कि कितना पैसा आ रहा है. But when you talk about going into this universe which has no physical existence, you don't know how much money is getting spent. And of course, because it is based on blockchain technology and subscription based technology, it is getting increased and or let's say getting fluctuated day by day. We don't know uska amount, uska money ka amount kya hai. हमें ये तो पता है कि there is this amount which is getting increased, but क्या है उसका, कितना, कहाँ पर transaction हो रहा है, we do not know, right? So therefore we have this Finance Act 2022 which is working on this, and a lot of emphasis is being made on merging artificial intelligence and blockchain technology to understand the cyber threats. Like I said yesterday, data is the new oil. Yeah, in fact, recently this COP 28 happened, and the countries that are really rich in oil and fossil fuels, they are talking about getting rid of fossil fuels. Why? Because they know that this is not it. Yeah, so data is the new oil, and to protect that data and at the same time working towards a technology that is creating more digital assets and more opportunities on multiple universes, we need a regulatory framework. Having a law, would it suffice? Would it suffice? I'm asking. No. Then what do we need to do? One solution to how to tackle this financial sustainability is to have a dialogue. The first thing first, right? Having these discussions. When we know that this artificial intelligence, or so to say algorithm, is biased in its own self, we need to make sure that the first training data set means what? The data on which the algorithm is getting trained in the first place. We need to make sure that this is versatile. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी का इंसान उसको ट्रेन कर रहे हैं, right? So we need to have multiple representations while working on this algorithm. So first thing first is having a dialogue, and then second, training this training data in the most versatile way possible. What is second? Have you watched this movie called Her? And this is crucial to understand how metaverse is going to affect us. So there are two movies. One movie is Before I Fall, where this girl dreams about her own accident and she dies in her dream. She dies in reality or her dream, it's still unclear. But every day she wakes up having her friends around, and she's reliving that accident every day. This is what is metaverse. Even if when you come out of that universe, your digital identity has been created. If anything happens to that identity, even if there is no physical harm, you feel scarred for life. And this is going to have multiple repercussions. If your money is lost, you are lost. If there is any physical attack to your digital avatar, you feel hurt. And it is happening. This is not something that we are talking just like that. There are reports on it, how this technology is playing with your mental health.
And it's not only about mental health. It is also about the real repercussions of this technology. अगर आप कोई भी असेट डिजिटल असेट खरीद रहे हो वहां पर पहले तो कभी आपका रियल मनी इन्वॉल्व है ही ना. Or because your trust is becoming more and more in this digital technology, you tend to invest more. और आपका जैसे इन्वेस्टमेंट चलता जाएगा आपका रियल लाइफ में there is an imbalance between real money and the digital money, and this is creating financial unsustainability. So how can we solve this financial unsustainability? First of all, to have a regulatory mechanism, or at least identify something like metaverse crypto scams. There are metaverse crypto scams, you know that? There are scams happening where real money is involved and the transactions are happening. Yes. But one of the biggest problem with metaverse is that there is no authority to count as to how many crimes are happening. We can't identify the number of crimes. Why? In India, we have NCRB, right? National Bureau for National Crime Bureau. That takes care of the number of crimes that happen in a particular state, types of crimes, so on and so forth, the year, the average of last 3 years, all of that. You know, there's a recent act, Criminal Identification Procedure Act. Do you know that? It allows collecting your biological samples, including your retina scan. Not you as in anybody who is associated with the case. It could be an accused. It could be a normal person who is just there as a witness. But the court finds that this person's sample is important. And you know who's collecting the sample? NCRB. Is NCRB there to collect samples or to keep it for 70 years? No. So therefore, you know, it was debated that we need to have a data protection law before we enforce this Criminal Identification Act. Why? Because I am collecting, let's say I want to build a very secure system, a technology that works well with you know, blockchain technology in metaverse, and for that I need your data. Where is that data going? We need to identify and ensure that first before we you know, create a system like that. So defining crime and criminals is going to be different difficult in metaverse. Measuring crime is going to be difficult in metaverse. How to tackle finance sustainability issue? First of all, legal framework on metaverse to start with. Implementing encryption systems for user accounts, transactions, and personal data security within metaverse. We are working on this universe, right? Having a system which is encrypted, having a digital identity which has, I mean, yesterday we were having this discussion and I think Malika ma'am said, proposed that we should have one digital identity which is connected to everything that you do. Yes, how much you are investing digitally, your Aadhaar card, your PAN card, everything, so that we have one digital platform wherein all your details are absolutely visible. Having that could serve. Then use AI and blockchain to establish digital identity and detect harmful content, right? We discussed this already. Having an AI system which works on deep learning. Deep learning is so complicated yet very advanced that it already knows what is coming. Why? Because it is working on behavioral pattern. अगर कोई भी अटैक या कोई भी मैनिपुलेशन हुआ है, the technology will automatically and you know, immediately know that some kind of manipulation has happened, and it will fix itself on its own. You don't need a third party intervention. You don't need human in the loop. क्योंकि अभी जो हम AI use कर रहे हैं, it is a narrow AI. Okay, there is going to be a super intelligence coming up soon, and for that we need to be prepared, because this technology, there is no human in the loop required. It can manipulate its own self. और इसीलिए ये problem है कि अगर there is some kind of bias in this technology, वो manipulation भी उसी level पे होगा, right? So this is one concern, and of course
having strong data security laws, because ultimately क्या कर रही है ये आपकी blockchain technology या AI blockchain में क्या help कर रहा है finance sustainability करने की? Securing your data, yes, making sure that whatever money you're investing in metaverse is first traceable, yes, and second secured. ऐसा ना हो कि कल की डेट में कुछ स्कैम हो, आपको पता ही नहीं आपका पैसा कहाँ गया, right? So traceability and making sure that it is getting collected in a certain way is the most important thing. So this is what is about for today's class. If you have any doubts, you can ask. Yes. Yes, but it is not about breaking. Yes, it is not breaking. It's not about breaking anonymity. That is the beauty of it. We want to keep things anonymous, but at the same time, there has to be a we call algorithm of black box paradigm. Why? Because if you want to trace it, it is untraceable. So you keep anonymity at certain level, but there is some traction of this. There's some traceability to it. There is some origin that is known or that can be known, and it is not going to be available to everybody. It is going to be useful for law enforcement agencies. To address the audience, I want to invite Shri Chatak Vajpayee ji. Please come over the dais and take your seat. Ma'am, you also, please. Siri और Alexa हमारी कमांड के अलावा भी बाकी सब कुछ सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं. वो एक वहां पर एक स्पीकर लगा है, आप जो भी बात कर रहे हो वो सब सुन रहे हैं, और क्योंकि वो उनके लिए डेटा है अपने आप को ट्रेन करने के लिए. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन गोइंग ऑन कि देयर आर सर्टेन ऑप्शंस जहां पर आप माइक ऑफ कर सकते हो, बट देयर आर सर्टेन ऑप्शंस जहां पर इट इज लिसनिंग टू यू डिस्पाइट यू नॉट नोइंग अबाउट इट. जनरली तो माइक ऑफ मेरे ख्याल से कोई करता नहीं होता है. हमारे सही का माइक कभी ऑफ नहीं होता है, एक्स्ट्रा का माइक कभी ऑफ नहीं होता. यस, तो 24 घंटे चालू है. हाँ, इनफैक्ट एक केस हुआ था यूएस में जहां पर कोई हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट हुआ था, एंड सिरी वाज लिसनिंग टू इट. तो क्वेश्चन आया, कैन सिरी बी अ विटनेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ? इट्स इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, व्हाई नॉट? You produce a certificate, it's your Siri, there's no manipulation, why not? So it is going to be a tricky thing, and if it intervenes with the criminal justice system, it is going to be very interesting and at the same time very, very complicated to actually dissect and comprehend. Ma'am, Yes. when we talk about regulatory mechanism, I'm here. Yes, sir. So we are talking about financial regulatory mechanism, which you have talked about through a finance bill. Second thing, which you also talked about, the regulatory mechanism which we require for data. So data privacy. Now, the third part which we are trying to enforce is AI. Yes. So what are the regulatory mechanism which government is thinking on trust? Yes. Because there's a lot of talk around now. Absolutely. That's we need to regulate this. Otherwise, it can be a boon also. It can affect the overall systematic. Like financial unsustainability can also be contributed to AI. Yes. So what are your views on? It's a very good question, actually. So as per, I mean, today we do not have any law on AI. Right? There's a AI Act proposed by European Union. However, Niti Aayog has come up with a national strategy on AI, which is talking about how AI is contributing in healthcare, finance sector, manufacturing sector, and other things, right? So there are multiple liability models that are being talked about. For example, if anything goes wrong, and if we have such an advanced system that is working on its own without taking help of human, who's going to be liable? Kal ki date mein hum bol dungi ki this machine is doing wrong, and so because machine is not a natural person, so they are working on liability models. First is criminal liability, civil liability, and contractual liability. So some sort of a system, still not in it's still in progress. It's not there. It's on paper, but they're talking about how can we make this machine liable
Because companies would also want some kind of liability attributed to this machine, otherwise कोई innovation ही नहीं होगा. हर चीज अगर हम कंपनी के ओनर्स के पास चले गए, या अगर चैट जीपीटी ने किया तो चलो जो ओपन एआई है उसके पीछे चले गए, they don't want it, then there's going to be no innovation. So और certain liability directive has to be established, जहाँ पे टेक्नोलॉजी आप enumerate करो that this is level 1 technology, level 2 technology, level 3 technology. Or kin technology, there can be certain technologies that are banned. For example, facial recognition technology. This is banned in a lot of other European Union, not in India though. Why? What this FRT is doing is, it is doing a mass surveillance. So you can have categories of technologies that can be, that can be there in the control of the government, or certain technologies that can be out of the control of the government. So certain kind of liability directive we need to establish. And we are in the way. I mean, we are, maybe in some years down the line, we might have an act on AI. But again, there's a different discussion that can one liability will be enough for all the things that are being done by AI? Because AI is being a surgeon also, and AI is being an AI assistant in contract drafting also. So can one model of liability be enough for everything that is being done by AI? So these are still the talks. सभी के आधार के डाटा कितने सुरक्षित हैं? सभी के आधार के डाटा कितने सुरक्षित हैं? So sir, basically if we talk about the Aadhaar database, recently yesterday we have seen, आपको मैंने कल ही दिखाया था, so 81 crore Indians का data breach recently हुआ है अभी. So I suppose कि data के बारे में अगर हम बात करें तो it is totally unsecured. बट कहीं ना कहीं अभी UIDAI इस पे काम कर रहा है, जो कल सर DOT से आए थे, सर से भी मेरी कल बात हुई थी, सो दे ऑल आर वर्किंग ऑन दैट. बट इट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट कि कितना इसको किस लेवल तक इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. बट एज ऑफ नाउ इट इज़ नॉट सेफ, बट देयर आर parameters which we should follow. If we will follow few parameters, then we can save our data as well as our Aadhaar data also. By the use of 5G technology, they are imposing certain more layers of security to it. So in that manner, in future, we should say, we will find more security in Aadhaar database or such kind of databases. Hello. Morning, ma'am. My question, I'm here, ma'am. Yes. Ma'am, my question to you is the concept of AI as a tool to predict, some kind of fraud is there. It is as a force multiplier. You can call whatever you want it. But the genesis of it finally boils down to the algorithm of the AI versus the blockchain. Now, if the blockchain technology is working on a particular algorithm, its genesis is that it could not track back the previous person. So do you think the AI would be able to, infringe into the algorithm of an blockchain and then, prevent it? Because otherwise the blockchain technology has no use if the AI is able to, predict or, to stop a particular crime. Thank you. Predictive algorithm is just one part of AI. So AI the algorithm of AI can, if worked alongside blockchain algorithm, if it is worked together, it can lead to a more transparent yet secured system as well. How are we going to do it? Of course, this is a lot dependent. My query is, ma'am, if it is they are working against each other. It can. So in that case, see, the blockchain is basically the genesis of cryptocurrency. Everything is that the confidentiality of the person who is transferring it or data, whatever is being done, is maintained irrespective of who is trying to intrude into it. Okay, AI is good. It is able to it can foresee, but can it go back? If we can be traced back, we can't go back. As you brought it earlier. That's what I'm saying. Foreseeability is just one aspect of AI. There are multiple other technologies that can be merged with machine learning that can have a more secured way. So we are looking at AI as just one predictive algorithm, right? But it is not just that. If quantum technology is being merged with AI, it is going to do the same work at a much faster pace, at the same time maintaining the anonymity. So if I understand correctly, then it's basically in retrospect, you cannot do any go back and
to find out a person, but in future you can predict, but not in the retrospect. Absolutely. Not in retrospect, you can't trace back anything. Absolutely. We also have a very expert who will address the audience, and I just want to invite Dr. Malika ma'am to please come over the stage. Good morning, ma'am. Ma'am, my question is like, what are the parameters which can be used to remove the bias in the AI models? What parameters can be adopted to remove any bias, whether it is the data validation on which the AI model is trained or some other models which we can? Yes. So when we talk about bias, like I told you, there are multiple bias on multiple stages of algorithm making. Yes. So first is training data bias. The first data that is being put in that algorithm. So if that data is defected, and who's putting, and there are many stakeholders involved in it, but let's just for brevity, let's just assume that there is algorithm setup, a bunch of scientists or people who are working on that algorithm. So first step, we can ensure that those people are coming from different backgrounds, so as to include all backgrounds and all things into consideration while making that algorithm. जैसे मैंने आपको बताया, US में black people are being discriminated because of the algorithm bias. So if we have more versatile group, more representation in training data set, we can have a more balanced data set, and then algorithm for sure. Yes, so that's what I'm saying. If AI is helping blockchain, blockchain can help AI. And we are talking about having blockchain technology in artificial intelligence. We want to create AI assistant judges only when there's blockchain technology making sure the anonymity of the content. क्योंकि पॉक्सो के केसेस आप देखो, बहुत सारी चीजें anonymous होती हैं. We cannot say things in public. How do we make sure that this person is not listening to us and also listening to somebody else? We want to make sure that happens only when there's a blockchain technology helping alongside machine learning. So definitely that could be one of the things that can be helpful in future. Good morning, ma'am. Yes. I'm here only. Yes, ma'am. मैम एक्चुअली क्या होता है, पुलिस जो है, जब क्राइम हो जाता है तो पुलिस की जरूरत पड़ती है. बट एआई का वर्ल्ड ऐसा है मैम कि अगर हम अगर एग्जांपल से समझे कि एक लैंड लेना है, आप बाउंड्री नहीं बना रहे हैं और आप घर बनाना शुरू कर दिए, ऑब्वियसली चोरी होगी. तो गो फॉर द बाउंड्री फर्स्ट, देन इम्प्लीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस और एल्स. तो हो क्या रहा है कि पुलिसिंग की जरूरत ही तब पड़ रही है जब आपके क्राइम हो जाते हैं. तो क्यों ना कुछ ऐसा सिक्योर सिस्टम हो, सिंस यू आर रिलेटेड विद द इलीगल सेक्शंस, तो आप इस चीजों को शायद बहुत बढ़िया. Yes, ma'am. तो इसका एक है रिस्क असेसमेंट सिस्टम AI ने निकाला है कि हम पहले प्रिडिक्ट कर लें, जो हमारे पास डेटा सेट है, हम पहले प्रिडिक्ट कर लें कि ये शायद चीज हो सकती है. जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी ग्रुप है, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, वो एक पर्टिकुलर एरिया में हमेशा एक रिकॉर्ड रहा है कि हर 5 साल में वहां प्रोटेस्ट हुआ ही हुआ है. Yes. और वो रिकॉर्ड हमारे पास है. तो वहां पर ऑलरेडी पुलिस खड़ी है, उसे पता है कि आज नहीं तो कल ये रिपब्लिक डे आने वाला है, इंडिपेंडेंस डे आने, कुछ होगा ही. दैट प्रिपेयर्स अस वेल, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ डार्क साइड टू इट, क्योंकि हमें रिस्क असेसमेंट मैनेजमेंट कहां से मिल रहा है? नंबर ऑफ पीपल अरेस्टेड इन पास्ट. यस. अब अगर वहीं पर बायस है ह्यूमन का, तो उठा के डाल दिया, अच्छा तुम इस कास्ट को, चलो तुम्हें अंदर करते हैं. ओके. देन दैट Government has a system like CMAPs. Police might be using CMAP system. So crime mapping analysis and predictive system is there, which do the data analysis, big data analysis in fact, and predict the happening of such kind of crime. So And also about the algorithm, suppose all the crimes are done by very expert kind of engineers or else, जैसा मुझे पता है कि ऐसा ही कुछ होता है. तो जब हमारे मतलब जो अकाउंटेंसी है वो क्लियर हो जाएगी मैम कि इतना अकाउंटेंसी में इतने कंप्यूटर्स और इतने ही मोबाइल होने चाहिए, नंबर कॉन्टैक्ट नंबर्स भी नंबर ऑफ पीपल के बराबर हो, तो आप एक लेवल तक उसको आइडेंटिफाई करने में सक्षम हो सकते हैं. बट इट इज आई थिंक वेरी टाइम रिक्वायरमेंट इज टू मच, टाइम भी लगेगा. research more about research as to how can we make this system work.
having this extreme complicated technology on one hand, and having this system Accountancy of the yes, person, yeah. transparency, accountancy, all of that. Okay, thank you. Good morning, ma'am. Yes. I'm Varun Negi, Assistant Commandant, CISM, ma'am. Ma'am, there's a very good movie. It is called Ready Player One. Is directed by Steven Spielberg, and it talks about a corporation trying to control a metaverse-like universe. But in reality, as of now, metaverse is already owned by one corporation, and we are talking about creating an alternate place where people are going to spend a lot of time. So my question is, ma'am, how do we regulate and a corporation owning so much data of so many people? And can we see a future where the national governments create some versions of metaverses? Like I told you, we already have Finance Act 2020 in force. And there are companies that are owning assets and owning business in metaverse already. So having a metaverse owned by a company and having multiple companies owning business in metaverse are two different things. So that is already happening. The only way we can regulate is to have a law which at least identifies this problem. Yeah. And secondly, having some kind of regulatory framework जो ऑलरेडी अभी है, हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन एआई वाज रिलीज्ड बाय नीति आयोग, जिसमें बात करी गई है कैसे. सो फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई, जैसे अभी मेटावर्स, अभी मल्टीवर्स भी आएगा, अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, तो हम पहले आइडेंटिफाई करें कि क्या प्रॉब्लमैटिक इश्यूज हैं, क्या क्या आ सकते हैं, देन कम अप विद द रेगुलेशन ऑन इट. Yes, ma'am. But my question again is, it is owned by Facebook. So will Facebook comply with the regulations made by the Indian government, or? Yes, why not? Why not? Because when we talk about IT Act, it has extraterritorial jurisdiction. That means what is happening in India, if a company is working or has an effect in India, it is going to be liable. It has to be bound by all the, currently we had intermediary guidelines also recently in 2023. They have to be bound by everything that we say if they want to work in India. And for that, we need to have certain strict guidelines. Only recently, there were certain blockchain technologies that were banned by, I think, a government. Nine cryptocurrencies. 9 cryptocurrencies. So it is happening only because there is some kind of regulation already in place. Thank you. So to add on to what she said, yeah. So to add on to what she said, recently many cryptocurrency exchanges have been banned. They've come into limelight. Reason why? Because they have not had compliance with AML policies. So since their platform was used to launder money, and they did not put any compliance in place, they did not put any measures in place, that was one of the reasons why they were banned, blacklisted out of it. But coming to the same thing, like she mentioned, first knowing that there is a technology, second accepting that this is going to be the consequences, this is where you need to do the damage control, this is where you need to do the firefighting. Accepting that has taken a very long time, and with the change and the advancement that is happening every day, like yesterday I was just speaking to somebody, and it was just a conversation where it said that every day you have to learn in our domain, especially because one day you are out of touch and you'll be like, sab badal gaya, things have come up, and you are, lacking that speed to catch up with it. The same thing, the process by which we are delaying in accepting that this is a problem is only strengthening the criminals and the people on the bad side to make use of the same technology that we can use in a positive way. Good morning, ma'am. Why aren't we using blockchain in? Physical currencies. In physical currency. Okay, so This current transparent system, as of you all said. And why are we not using it? There are all records of transaction and all. And all the physical monies can be traced, and it's transparent and it's viewable to all. right. So the government is working on the concept of digital rupee and all that. Talking about all the physical All the physical currency. currency existing in India, Mm-hmm. if there is a blockchain for that, every ledger, it's only a ledger, right? Right. Then it will be available to everyone to see how much transaction has done.
Agreed. The only problem here I see is that with blockchain and with currency, you need to have everything that comes in from the cryptocurrency point of view, where you have the peer-to-peer network. It is not governed by the RBI. So that is the whole idea where blockchain has been used as a platform to build cryptocurrencies. Blockchain is entirely different from cryptocurrency as per my knowledge. Is one of Still, the it's use only a cases. ledger only. If, Open not ledger. ledger only. Mm-hmm. From file to file, it will be a recorded as per time and seconds, it will be recorded. For all the physical currencies, we can use blockchain also. I think in Scandinavian countries, they are using this blockchain for Mhm. their physical currencies also. For Okay. refugees, they are giving credit cards and all through blockchain only. Right. From a security perspective, I do find it a very valid argument, to be honest. It can be a case because the numbering system that is there on the currencies, the same can be utilized to show more transparency in transactions. But having said that, it will not show you who transacted that money with whom. It's just a record. It's just saying that this money is spent. This number cash has been spent. That's the only use case of it, of blockchain. Probably that's why it's not being put into picture as of now. uh, Besides that, blockchain, the government is implementing a lot of new technology wherein when we think about evidence management systems, where the whole technology of blockchain, the same thing, like you cannot make any changes to it, so it's tamper proof. You cannot, whatever changes you make, it will be time stamped, and it will alter the hash value, like what we just went through yesterday. So these kind of things are being put in use. Now, when we speak only about the currency, they are thinking on building the digital rupee. But the whole problem is why crypto came in the first place was to have the power with the people within the people, not have a government own it. That's the reason why it was not um, headed by a body like RBI. It is the people who control it. So if there's a situation like war-like situation, people will still be in power. It won't be the government just in power. But if we introduce things that are again within regulations, then crypto as an idea, as a technology, will lose its efficacy, which also means that people will not adopt to that technology. Because again, there's somebody overlooking it. People are knowing what you are doing. So that's the reason why it's used and not used both. Hello. Right. So you mean reconstruction of everything that has been time logged? Can you do that? Yeah, you can do that. Because everything is time stamped. You make changes to it or no. Everything is going to show you a timeline pattern. So reconstruction is possible. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, it can do that. So there are two types of blockchains, public and private. So as an organization, now many institutions, even corporate bodies, are coming up with their own blockchain. Even banking systems. Say, for example, Bank X wants to have their entire system on the blockchain. Why? Because, say, document signing. Some documents are available hierarchy wise. The higher you go up in the hierarchy, they have access to all the visibility that is happening within the bank. The lower you come down the hierarchy, the access reduces. And whoever is signing it, whoever is viewing it, whoever is opening that folder and looking at the document, all of that is being timestamped and entering the blockchain. Benefit of this is that it will be visible on the ledger. Now that ledger can be public ledger if it's a public blockchain, and it can also be a private ledger which is only accessible by the people you have authorized within your organization. So yes, CAPT as an organization can uh, transform entirely on the blockchain. They can have their own blockchain network. They can do all the documentation, hiring, even examination of forensic files.
all of that can be logged. In fact, we have come up with a Make in India tool called Qubit or Secure Chain. So what it does is it is a blockchain based evidence management tool which logs everything. So when you are at the crime scene, whatever you are seizing, whichever devices you are picking, all of that is being timestamped and entering into the blockchain. So that is one way to do it. There can be many other methods which you adopt for documenting for the process of analysis as well, and have all of that combined and fused onto one system where it's all unified and everything is in the blockchain. You can revisit it, you can reconstruct the entire timeline. Ma'am, here. As we were talking about, there should be one digital identity for everything, where all your details are embedded, like all other details. So don't you think that it would be more easy to lose them all at once? Means once it got lost or is stolen, the person who stole it can get the access of all your other details easily. Correct. Very good point raised. I was brainstorming this within my own mind, and my answer to this was that let's look at Aadhaar. How many times it has suffered a breach? Let's look at Big Basket leaks or Canva.com leaks, any leaks for that matter. Big Basket, the data that is available is including your full name, your mobile number, your house address with PIN code, your IP address, your username, and your password. Password can be hashed as well. So this has leaked back before 2019. How many of us have changed houses that often? No. If it's out there, it's out there. So that's one drawback, which we can't do anything from a technological front point. But I strongly believe that there should be a mechanism where users, like we, should have privacy mechanisms where we can choose to redact whatever information we want about ourselves to be out there or no. But this will again have a lot of backlashes. So it's like, again, weighing which one has more pros than cons. Having the digital identity, one digital identity linked to all your social media accounts, this again, if governed by the government, by one body, will give them the monopoly. Again, used in the bad faith during elections. That is a very big problem area, and it is a very big challenge, especially with things like Cambridge Analytica, where they have used social media to prime, psychological priming has been done for people in order to get votes, and the manipulations that have happened. The same thing, if digital identities are leaked, you will start getting messages, vote for XYZ person on your messengers as well. That will release a lot of access, but on the other hand, it will make people accountable. Why crimes are happening on the internet? Supreme power, anonymity. दे नो दैट हम पीछे बैठ के कुछ भी कर सकते हैं, कोई नहीं पकड़ेगा, या फिर बाय द टाइम पकड़ेगा हम कंट्री से बाहर निकल जाएंगे, या फिर द केस विल stretch for so long that it will not make any use as compared to the current benefits the person is getting. So supreme single source, yes. Yes. So our problem area, what I feel, should be to target anonymity, how to de-anonymize that. So either we use technology that can put things in the puzzle, bits and pieces mein, like how chain analysis can help you trace the flow of funds. How certain entity tracking tools can give you ideas that, okay, this is the kind of technology or this is a service that they have used. Either we use that, or we put a rule that comes into the legislative power as well, where one identity will survive all your digital accounts and one person cannot have more than 2 email IDs, more than 2 Facebook accounts for that reason. As of now, I think every Gmail ID you can have 3 accounts, but that is done by Gmail, not done by India. So we should be like how China has done. China has very smartly bordered something that is like borderless internet. Very required. And they have built that gate really well from the very beginning. Now imagine how many years back they have started doing this. Nothing of their country is outside. How long did we hear the COVID news coming from China? Nothing. Very, very few days that we got information from China on what's happening there. They were able to safeguard it. And that works very well in the interest of national security as well. Ma'am, when we talk about, yeah, here.
Yes. Ma'am, you were talking about AI models being used for various requirements and even some critical cases like AI as a judge or AI as a police. Now, if something serious goes wrong, what will be the accountability framework? Like, will the data aggregator who fed data into the AI be accountable? Will the researcher who created the model, is the corporation whose model it was, or the government which allowed that model to work? I mean, who will be accountable? Yeah, so that is one of the biggest drawbacks. And that is the reason why we are not yet up with a liability directive, because a lot of discussions is going on about having a corporate or giving a corporate identity to algorithm or AI, so that just as companies, they have their separate legal identity. So they can be solely liable. Let's say if something really wrong happens, right? So there are certain filters that we keep in algorithm as well. Okay. So if I am a algorithm setter and I am keeping certain filters to it, and if something absolutely drastic happens or something hazardous happens, let's say I create a robot having an AI software and that robot kills somebody. So that liability, if I am putting that filter, I have to go certain regulation, certain frameworks as well, that how much of liability I'm going to take if this certain consequence happens. And if not, if I'm creating a general system and some kind of manipulation happens because of the machine, not because of my setting, because it is working on reinforcement technology, it can do things on its own, then probably some kind of vicarious liability where I am also partly liable and the machine is also partly liable. Because, but how can you punish a machine? You're going to pass an injunction order and ask it to destroy the machine, right? Or the manufacturer to destroy the machine. That is it. But yes, when we talk about liability from the point of view of AI, we are largely talking about compensation, because a party who has suffered loss because of AI or negligence of AI, they want compensation. And as of now, we can only provide compensation, and that is being talked about extensively in European Union. They have compensation directives where compensation can be provided if any kind of nuisance or any kind of breach happens because of AI. So that compensation thing is done, but criminal liability, we are not really sure. They are talking about giving a totally legal identity to AI, make it a company, but then there's a question because it's not a person and it cannot be a legal entity as well because there are certain issues attached to it. So that is a problem, but we are still coming up with it. Yes, ma'am. I have a question. AI and blockchain, they are likely to get into hands of the terror organizations, supposing. So now, most of the terror organizations, when connect with an explosion, it's action. So they are reading the patterns, behavior pattern of the target. Like in India, wherever these are happening. So those organizations, they are into conducting recce of the targets and then they mount that attack, that sort of. So it is likely to get into their hands. Already होगा ही रहा होगा. Even border पर भी अगर जो हमास ने breach किया है इजरायली can happen with us. Like face off हमारे होते हैं. तो ये जो enemy side से हमारे ऊपर blockchain and AI combined जो उनका use हो रहा है, what is the counter to it and how can we develop it? Sir, these days we have drones also that can record, they can do video recording as well as audio recording. So if an enemy nation wants to use technology against us, of course there are ways. But what I don't know how can we go fix it from the technology point of view. We can have a stronger and more secured system that is less likely to get breached. And that will only be done when we have more research and expertise in this field. And maybe we'll learn only by knowing what are the drawbacks. Only when there are breaches, we'll know that this can be breached. But at the same time, having some kind of regulation, and I'm emphasizing on it because only when we have some sort of regulation, we are identifying this. And then there can be ways out to making it more secure. But
how can we do it from a technology point of view? Thinking from a technological perspective, I feel technology can be counteracted only with the help of technology. So if they are deploying it, we have to make sure that we deploy the best version of it. Plus, it's not just having expensive and latest, whatever latest, just buy it blindly. No, very basic cybersecurity measures need to be implemented on the ground root level. Like your cyber threat intelligence. How many of us have monitored our cyber infrastructure internally? How many of us are aware that whatever IP or whatever network we are connected to, what kind of activities are happening internally within the organization? So we always live in a dilemma that it will not happen to us. First, we have to come out of that. And every day, if we take that basic, like how we brush our teeth every day, we take a shower, that basic cyber hygiene needs to be there. That's where you will safeguard first yourself. Once you are safeguarded, you will be less affected by these kind of breaches as well. And then you already have your technology like drone against drone, AI against AI, combination of everything put into picture. But it should start from the basic cyber hygiene level. Are we not becoming more vulnerable by giving our phone numbers everywhere, our email IDs everywhere? Because that is our ID on the internet. Correct. And that is what leads footprint on the net. And Correct. that is what AI is picking up on. Right. So, like sir had made a wallet yesterday, it was totally anonymous. So, with this compulsion, हम shopping में भी जाते हैं, बोलते हैं phone number दे दीजिए. Everywhere it is. So, उसका कोई legal मैम कुछ है इसका कि why everybody is asking our email बहुत and जरूरी है. these items? Sir, इसका एक legal ये है कि now you're not bound to give your phone number. You know that? You can very well say, I don't want to share my phone number. The problem is we are not aware, and therefore such kind of deliberations are required. You have a right to say no. They just want your phone number to do their marketing. You can very well say the no. What they're doing is they're sending the ticket on your mobile phone. They're not giving us pay for these things. So legality has to be built up into that. But for airlines also, of course, for certain things, phone numbers become important. But we have reached to some level. Initially, we had to give our phone numbers for Domino's Pizza and other things as well for shopping. Now we can say no. There are guidelines regarding that. Maybe in future we can have some kind of digital wallet where we can put our documents, and at the same time we don't have to share our details. आपको टिकट नहीं दे रहा है, आपके मोबाइल फोन पर ही आ रहा है. There's no other choice. There's no other choice available. Time is running. We will entertain one last question. One last question now, please. मैम इसके आंसर करने के लिए ये मॉनिटर हो रहा है कैसे, जो हमारे नया लॉ आ रहा है, मतलब आईटी एक्ट में अमेंडमेंट हो रहे हैं कंटिन्यूसली. वी हैव इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस. क्योंकि क्या होता है कि आईटी एक्ट में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको इम्यूनिटी मिली है कि अगर उनके प्लेटफॉर्म पे इफ एनीथिंग इज गेटिंग पब्लिश, दे कैन वेरी वेल से कि नहीं, हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. अब इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस में के अकॉर्डिंग उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी बनेगी. तो अगर मान लीजिए कोई एक पिक्चर है चाइल्ड की जहां पर चाइल्ड को अब्यूज किया जा रहा है, वो ट्रांसफर हो रहा है यूट्यूब से किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे,
या इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम इज गोइंग टू फिल्टर दैट पिक्चर, क्योंकि अब उसकी लाइबिलिटी आ गई है। तो लॉ एनफोर्समेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वी कैन मेक ईच एंड एवरी पर्सन लायबल हु इज इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस। हुआ है तो उसमें पूरा जो पैटर्न देखा गया, उसमें ये देखा गया कि पूरा एक वेब है, कहाँ कहाँ से पैसा आया, किस किस के अकाउंट में गया, कब कब गया। वो जब सारी चीजें जब एक जगह से कंप्लेंट हुआ, तब जब देखा गया तो पूरा नेटवर्क सामने आया। तो जहाँ से हो रहा है और एट अ टाइम बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, तो जब वो ट्रांजेक्शन इतने ज्यादा हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के अकाउंट में इतना सारा पैसा आ रहा है, तो ये मॉनिटर जो भी रिलेटेड सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर, जो भी बैंक है, वहाँ से क्यों नहीं हो पाता है कि एट अ टाइम किसी पर्सन के अकाउंट में इतना सारा पैसा एक मतलब आ रहा है, चाहे वो छोटा अमाउंट है चाहे वो बड़ा अमाउंट है। तो वहाँ से अकाउंटेबिलिटी वो सेक्टर की क्यों नहीं इंश्योर होती है? मैम जैसे आपने बोला, हमारा डिजिटल डिवाइड है, एक रीजन ये है कि इनफैक्ट आप जो डिजिटल डिवाइड की बात कर रहे हैं, जो रूरल इंडिया है, वहां पर बच्चों को टैबलेट तो दे दिया है पढ़ने के लिए, बट सैनिटेशन ही नहीं है प्रॉपर। वो जाते नहीं है स्कूल क्योंकि उनका टॉयलेट्स नहीं बने हैं प्रॉपर उनके लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए। सो लाइक यू सेड, देयर आर मल्टीपल रीजन। वन इंपॉर्टेंट रीजन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना प्रिपेयर्ड नहीं है हमारा बैंकिंग सेक्टर का। हमने बना तो लिया, ये सारी चीजें इजी हो गई हैं, बट उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास उतना स्ट्रॉन्गर और एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को क्या आती है, जब भी कोई फ्रॉड होता है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, आप बोलते हो कि इतने जल्दी हो गया कि वो 2 घंटे में इतनी सारी चीजें हो गई कि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि वो मल्टीपल अकाउंट्स में कितने, और कल सर ने बताया कि आईपी एड्रेस वो इतने जल्दी चेंज हो जाता है कि उसको डिटेक्ट करना कितना डिफिकल्ट है। तो आई थिंक वन वे by which we can solve it, I don't know how soon we see it, but to have an infrastructure on multiple levels. To add to that question, I'll speak from a digital wallet perspective, from a crypto perspective. Many cases that we've dealt with, we've found this web that you mentioned. Every crypto exchange will have compliance. They have regulations within themselves that are user defined based on their organization. Every bank also has a threshold limit, which raises red flags that there is an irregular activity or something strange has happened. That is why they will stop or they will proceed with any transaction or they will freeze it simply. But that is only user defined. This is based on our own experience as humans that okay, 10 lakhs plus amount is a red flag. Call up the person if it has to be transferred. What about smaller amounts? Majority of the statistics, financial fraud related, are less than 10,000 rupees. Threshold कहाँ से लाएंगे उसका? And monitoring a population as big as ours and the number of transactions that have multiplied with the help of Google Pay. What is the lowest transaction you have done using Google Pay? I have transferred 5 rupees. 1 rupee. Exactly. So the number has increased phenomenally, especially after demonetization. When all of this came engulfed together, the load increased way too much. The thresholds are again user defined based on our own understanding and our own intelligence, where we have gauged that this is the border we need to make. Right? Now coming from a crypto perspective, nobody's monitoring it. Wallets किसके है पता ही नहीं है. बहुत तरीके wallets create करने के. Except going to the exchange, you can create multiple wallets. In a second, you can create like hundreds of wallets using a mobile application. You don't have to pay, you don't have to give your KYC. So then when Bitcoins are flowing from one end to the other, how will it get monitored when you don't know who is operating it? Right? Yeah, that was the answer for it. Good morning, ma'am. This is last question. Sir. Since I can't spot you. faculty for next section already arrived. Sir, this is last question, sir. मैम आप तीनों साइबर एक्सपर्ट हैं और बीइंग अ साइबर एक्सपर्ट मेरा तीनों से सवाल है कि अब हमें ये तो शंका है ही नहीं कि एआई और ऑटोनोम क्या क्या कर सकता है ये। अब सवाल हमारा ये नहीं होना चाहिए कि क्या हमें इसको डेवलप करना चाहिए या इसको डिमोटिवेट करना चाहिए इसके डेवलपमेंट को। डिमोटिवेट तो नहीं हो सकता है। नहीं चाहिए, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं होगा। इसे अपोज करना चाहिए, इसे प्रमोट करना चाहिए। प्रमोट ही करना चाहिए।
इसके We don't have another we option. don't have any option. प्रमोट ही करना पड़ेगा सर इसको हमको. सेकंड, जो एक सर ने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया था, हाउ विल डील विद ऑल दीज थिंग्स. जो क्या ये संभावना नहीं है सर कि ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर देगा? We cannot live without technology. Complete digital detoxification is not possible. You cannot detox yourself, है ना? You have to rely on technology in some or other way. This answers the question. The faster you adopt, the better it is. and that is why we have created special cell for ethical hackers, जो कि सर ने भी कहा था कि how we'll deal with all these things. So if we go like back 10 years before, so बहुत सारे attacks हमारे इंडियन रेलवेज पर और इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पर होते थे, बट नाउ डेज वी हैव स्पेशलाइज्ड टीम फॉर डिफरेंट कंट्रीज हैकर्स. वी हैव टीम जो कि उनकी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स है और डिपार्टमेंट्स है उनको वो काउंटर भी कर रही है प्लस हैक भी कर रही है. सो दिस इज द वे वी कैन डील विद ऑल दीज थिंग्स. डेफिनेटली सर, लाइक कल भी 1000 सर ने कहा था वी हैव टू अपडेट और वी हैव टू गिव द प्रॉपर ट्रेनिंग टू ऑफिसर्स टू. दैट इज द मेजर की रोल. And also have new younger participation included. Because आप कितना train करोगे जो already there, or people like us, we are already in our own domains, we are comfortable there, and that moving that and giving them new, suddenly you are telling them learn blockchain and all, not possible on a level, intellectual level, where we need to act fast these days. So the better way is to have youth involved who are already on these paths of learning. Have public-private partnership where you already have private companies that has these kind of expertise. So you reduce the burden on your own resources and you utilize it in a timely fashion. So yeah. कोई एक कॉमन टोल फ्री नंबर या कुछ साथ से पूरी से अफेक्टेड होता है 101 Yes, sir, already government. So that is 1930, which we have showed yesterday. I4C is overlooking that. But आप जो कह रहे हैं कि immediate action हो, that is a challenge. They are working on that. They are creating their team and they are gradually like increasing their teams and intelligence too. Gradually वो मुझे लगता है कि upcoming time में वो एक proper हो जाएगा जिसमें you can, if you'll call them and they'll just revert you in a minute or two. I hope. Thank you very much. Now I invite Shri Gautam Sen Gupta to propose vote of thanks. Very good afternoon to you all, my most respected seniors and the faculties around here. It has been a very nice interaction. And most importantly, we are going through those phases of life where the digital part is more important to us rather than our physical part at times. Let it be money transfer, let it be saving files, let it be anything and everything related to our day-to-day or our everyday situations. The most important aspect being knowledgeable to what is happening, understanding what we are doing, and giving us the safeguard so that we can understand the vulnerabilities that we are facing at this point of time and making bridges and limitations to at what extent we should extend ourselves to those vulnerabilities. Thank you. Now I invite Sri Praful Commandant Sir to present a memento to the speaker, Miss Astha ma'am. And I also request from the speaker sitting on a dais to please come down. Send a memento.
Now we have tea break time. So tea is available at the lawn of this academy. Kindly join us for high tea. It is at my left side. सामने राइट साइड में अरे मेरे भी फोटो खींच दे। सब तो रहेगा। मेरे क्यों खींच दिया? भाई बाबा। बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। हम कुछ नहीं करेंगे। बार बार बंद। स्लीप स्लीप नहीं वो ऑफ करता हूँ स्लीप मोड। Here, Ani. ठीक हो रहा मैडम, दिक्कत तो नहीं, लाइव नहीं, यहाँ भी ठीक है ना? विनय विनय कहाँ है? क्या उसके आए थे? अच्छा यूपीएस बीपीआर वाला पे आ रहा है। अच्छा, अभी जो फैकल्टी का आएगा ना मेरे को व्हाट्सअप कर देना। ये खुला हुआ है। हाँ ठीक है। ये सूर्या खुला हुआ है ना, ये मैं तो इस पे डाल देनी। डेस्कटॉप पे कॉपी कर दें। हमको कोई ट्रांजेक्शन नहीं आ सकता, चाहे वो 5 रुपए का ही नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन फिक्स कर दीजिए। क्या होता है रेगुलेशन तो हमें फॉलो करना पड़ेगा जितना टाइम से ये हो रहा है।
अच्छा मेरा मेरा एक प्रश्न बिल्कुल सिंपल सा, क्या आने वाले समय में किसी भी साइबर फ्रॉड के लिए कम्युनिटी आगे ये उनका हो गया ना लेक्चर, कागज आ गया, भाग के रख लो, इसी में डालो, डाल दो आप, इसकी क्या है, कब आएगा किस पहले तो कोई बाकी लड़की छोड़ो, चाहिए क्या? तुमको हो गया, आदमी हमारा बाप दो थोड़ी देर में हो गई छिपने का मौका नहीं मिलना है बॉस, क्यों चलो चलिए तो लगी छोड़ो, हो गया, जल्दी लगाओ इसका, एक एक लगा के जाओ। यादव जी नेक्स्ट स्लाइड रेडी है ना अभी? हेलो हेलो विनोद यादव जी, नेक्स्ट स्लाइड अभी रेडी नहीं है ना? मेजर कहाँ गया? मैंने मेजर कहाँ गया? कौन? सर यूपीएस ठीक करने आया हूँ। अच्छा अभी जो स्लाइड आएगा ना मेरे को भेज देना व्हाट्सएप में। हाँ? तो आने तो दो, कौन फैकल्टी है, किसका आएगा तभी तो। Okay, okay, carry on, sir.
शिवानी मैडम जाओ। Hello, check. Hello, check. 1, 2, 3. Hello. आप कैसे आपको क्लास क्लास आपका है पहले मेरा जी हाँ इमीडिएट कैसे नेटवर्क हाँ आ रहा है पीपीटी आपने मेल किया है तो उसको डिस्प्ले मैं भेजता हूँ वहाँ मैं सेंड करता हूँ सर और इसको कौन लगा रहा है पीपीटी किसके पास है ये मैसेज करो ना मैसेज है किस सर पे सूर्य वाला सूर्य अभी कनेक्ट किसका है सूर्य का है आप दे रहे हैं ठीक है तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर है ना आप इसमें से स्टार्ट करें हाँ लगाओ वो हो जाएगा कनेक्ट हो जाएगा ये HDMI कन्वर्टर इज दिस द कन्वर्टर हाँ सर ठीक है लगा दो पकड़ो इसको निकालो Just use it. नहीं वाईफाई से तो कनेक्ट कर दिया मैंने इट्स जस्ट स्लाइड चेंजेस यार अभी तो भेजा ही नहीं कर दिया
हाँ देख वो लगा दिया ना, वो लगाएंगे उसमें। Actually, so now in continuation to the proceeding of this conference, we have very expert from the industry, Shri Prashant Surna Jain and Shri Vikram Subburaj. So they will be covering the topic non-fungible tokens, a legal perspective, NFT crime and compliance, and anti-money laundering investigation techniques related with virtual assets. I would like to give a brief introduction of Shri Prashant Surna Jain and Shri Vikram Subburaj. And I also invite Shri Vikram Subburaj ji to please come over the stage. Shri Vikram Subburaj is an alumnus of IIM Calcutta and BITS Pilani. He, along with his batchmate Arjun Vijay, founded Geotus in 2017. Geotus is India's top-rated virtual digital asset platform with over 1 million customers. Vikram earlier spearheaded large categories for Amazon's Europe, Middle East, China and Indian markets before starting. He is one of the torch bearers of crypto adoption in India. He and his team have also been imparting training to police departments of various states like Tamil Nadu, Kerala, Telangana, Jharkhand, Uttar Pradesh and Gujarat. Law enforcement across the country also reach out to Vikram and his team to help track and trace crypto transactions in the course of various investigations. Vikram also writes for various leading publications like Economic Times, Business Standard and Republic Word, and is leading voice in blockchain and crypto in India. पेश नहीं हो रहा इसमें, पेश नहीं हो रहा, पेश नहीं हो रहा। इसको खोलिए पहले तो कट गया। मैंने मेल तो किया था ऑलरेडी, मेल किया था मैंने। मेल है? हाँ मेल कर मेल मैंने वो जो परवेज सर ने जो आईडी दिया था उसमें कर दिया। साथ तो पता क्या हुआ सर, इसलिए आप सभी को व्हाट्सएप पर ठीक है, मैं नहीं खोल रहा है, सभी को व्हाट्सएप पर इस पे खोल देना। नहीं मिला क्या? सर को भी इससे ये लगता है। नहीं ये रहा, आपको मेल तो क्या है? मेल आईडी बोलिए। तो व्हाट्सएप कर दिया सर? हाँ कल ही कर दिया था आपको सर। आपका मेल And Shri Prashant Surna Jain is a serial entrepreneur in artificial intelligence and blockchain. He is currently co-founder of Snapper Future Tech,
and Indian Blockchain Institute. Shri Prashant was awarded as #1 Super Young Achiever under 30 in the year 2019 by prestigious Hindustan Times. He is a winner of Forbes Digital and Marquis Icons of 2021, Investor Techie at Soul Entrepreneur at Heart, excited about blockchain and emerging tech. Currently, Prashant also works as a tech consultant to several startups and companies globally. They're setting up. Am I audible to everyone? Yeah, so good morning. I think till the time they try to find a way to resolve that, I think I'll generally try to understand from every one of you how troublesome has crypto been in your lives? Has cryptocurrencies created more trouble in policing, or are you guys being able to handle it? Can someone give a quick opinion? हाँ अच्छा वही इन्वेस्टिंग स्कैम है सही है यही है ना सर हाँ से हमेशा loss. So not only two, they two are disclosed to me, but other I mean I think 10 to 15% must be out of 135 who is going to be such kind of trapped. सही है सही है सही है सही I think but lot of them everyone is a police official. Yes, everyone. Okay. A lot of cybercrime police officials definitely आपको ये job crime के बारे पता होगा job crime का issue एक लिंक आते हैं नहीं तो कोई भी व्हाट्सएप पे रीच आउट करता है एक एक्टिविटी करने के लिए बोलता है उसके बाद 2-3 एक्टिविटी करने के बाद थोड़ा इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है वो इन्वेस्टमेंट होने के बाद वो क्या बोलते हैं वो पैसा बाहर लेने के लिए आपको एक टैक्स पे करने के लिए बोलते हैं वो भी पे करेगा बंदे उसके बाद वो क्या बोलेगा अभी एक और तरीका है वो क्या बोलेगा हमारा कंपनी अभी बहुत मुश्किल पे है आप थोड़ा पैसा दे दीजिए और वो इश्यू रिजॉल्व कर देता हूँ मैं और आपका पैसा भी रिटर्न कर लेता हूँ यही बोलेगा और इसी इश्यू पे ऐसे नहीं है अनएजुकेटेड लोग फंस रहे यू विल सी अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स राइट वो छोड़ दीजिए एटलीस्ट एजुकेटेड अलग बिजनेस पे है तो वो भी ठीक है लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स किसी को कंप्यूटर के बारे में पता है लाइक इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पता है और फिनेंशियल फिनटेक में काम करने वाले लोग भी they have been party to such crimes, right? So to solve this case, we have to go to the basics. उसको उसमें क्या क्या components है so if we don't understand that so पहले यही है so even if you are able to crack a case and find out a case it is the responsibility of the police official also to explain it to the in the courts to the judge he has to understand right that is also it's the police official's responsibility to make him understand so only if you understand you can make him understand yeah I mean if it's a job scam or investment scam don't worry it is yeah I don't worry you can I can show you even a lot of them so I wantonly playfully go interact with a lot of scammers to understand what they do a lot of UK numbers or +9 to Pakistan numbers stuff like that you'll get right so it is a happening reality lot of cases are coming up lot of people are getting duped and scammed there is somewhere a mix of Chinese loan up scam plus
this job scam, which is mixing together, and crypto is being used one of the mediums to transfer funds. So we have to understand these components and try to see how we can resolve it. I think the first successful step is the tech here has been resolved. Yeah, I think so. We'll start with Prashant. Yeah. Thanks, everyone. Hi, good morning, everyone, and Jai Hind. It's my pleasure and honor to be here. तो स्टार्ट करने से पहले आई थिंक थोड़ा सा हम इंटरैक्टिव रखेंगे ताकि मुझे ये पता रहे कि आपको मतलब ब्लॉकचेन क्रिप्टो कितना समझ में आया, तो मैं उस हिसाब से सेशन को आगे लेके जा सकता हूँ। और ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आप लोग को डेमो भी बताना चाहता हूँ, जिससे कभी अगर आप लोग के पास कुछ इन्वेस्टिगेशन आए तो आप उसे एक्चुअली ट्रैक कर सके बेस लेवल तक, राइट? तो आई थिंक आप सभी को ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होंगे, राइट? एक बार हाथ उठा दीजिए प्लीज, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं मतलब कैसे मुझे सेशन को लेके जाना है। एंड क्रिप्टो करेंसीज क्लियर? ओके, परफेक्ट। तो मैं डायरेक्टली एक बार यूज केसेस की तरफ जाता हूँ, क्योंकि ये इकोसिस्टम में बहुत तरीके के स्कैम्स होते हैं, बहुत तरीके की मनी लॉन्ड्रिंग होती है और बहुत तरीके के क्रिप्टो एसेट्स भी होते हैं। मतलब आपने अभी सिर्फ क्रिप्टो करेंसी देखा होगा, आपने ये देखा होगा कि ठीक है एक बिटकॉइन है, एक इथीरियम है, बट वैसे अलग अलग तरीके के हंड्रेड्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज है। और ये सारे क्रिप्टो करेंसीज ऑपरेट करते हैं एक नेटवर्क पे, एक पीयर टू पीयर नेटवर्क पे। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक दो कैटेगरीज फॉर्म हो रही है। एक तो हो रहा है कि क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड जो कि पब्लिक ब्लॉकचेन पे है और जिसकी सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन बहुत टाइट है, जिसकी वजह से हमें ट्रैक करना काफी चैलेंजिंग है डेफिनेटली। और दूसरा है एंटरप्राइजेस, जहाँ पे बैंक्स वगैरह जो है ये टेक्नोलॉजी को यूज करके अलग अलग तरीके के एसेट्स डेवलप कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, राइट? तो अगर आप ये वाला एक चार्ट देखेंगे, इसमें आपको एक ये समझ में आएगा कि एक तो टोकनाइजेशन है, जहाँ पे वर्ल्ड में काफी सारे एसेट्स को क्रिप्टो टोकन्स बनाया जा रहा है और उसको ब्लॉकचेन नेटवर्क पे इशू किया जा रहा है, जैसे इथीरियम हो गया, जैसे सोलाना हो गया, राइट? और एक एंटरप्राइज यूज केसेस है, जहाँ पे जैसे हमारे बैंक्स हो गए या आरबीआई खुद ही हो गई, जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हम सीबीडीसी बनाएंगे, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसको हम कंप्लीटली यूज करके हम पूरी इकोनॉमी के अंदर हम कंप्लीट मनी मूवमेंट को हम ट्रैक कर सकते हैं, राइट? तो ये वाला जो है कंप्लीटली रेगुलेटेड साइड है, जहाँ पे ट्रैक करना, ट्रेड करना कंप्लीटली इजी है और ये इतना मल्टी डायमेंशनल नहीं है। बट इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा जो आज की डेट पे जो कैश मूवमेंट है हम उसको ट्रैक कर सके। बट ऑन दी अदर साइड, जैसे हम अगर टोकनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, राइट? तो आप यहाँ पे देखोगे कि क्रिप्टो करेंसीज है, उसको ई कॉमर्स, गेमिंग, कूपन्स, लॉयल्टी प्रोग्राम, क्राउड फंडिंग, जहाँ पे लोग अपने टोकन्स इशू करके फंड रेज कर रहे हैं, एसेट्स। तो एनएफटी जो है एक तरीके का एसेट है। अभी एनएफटी के हमारे काफी तरीके के कैटेगराइजेशन हो सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। बट आप एक बार हाई लेवल पे ये समझिए कि इतने सारे टोकन्स हैं जो आज की डेट पे काफी ब्लॉकचेन नेटवर्क्स पे एग्जिस्ट करते हैं और वर्ल्ड में हंड्रेड्स ऑफ पब्लिक ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जैसे इथीरियम हो गया, आपका सोलाना हो गया, रिपल हो गया। और सब ब्लॉकचेन का जो बेसिकली जो बेस है या प्रिंसिपल है वो सेम है, बट उसको ट्रैक करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट? तो अगर आप देखेंगे जैसे क्रिप्टो करेंसी है, ज्यादातर यूज कर रहे हैं एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट, एंड देन यूटिलिटी टोकन्स है जो एक तरीके के आपको सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो एनएफटी इज काइंड ऑफ अ यूटिलिटी टोकन, जहाँ पे आपको सर्विसेज मिल रही है कोई ना कोई तरीके की। एंड देन सिक्योरिटी टोकन्स है विच बैंक्स आर यूजिंग और रेगुलेटेड एंटिटीज टू गिव एसेट ओनरशिप ऑन दिस टेक्नोलॉजी। तो आज की डेट पे अगर सपोज एक घर है, तो घर मुझे मैं मतलब गवर्नमेंट रजिस्ट्री जो है उसको भी हम टोकनाइज कर सकते हैं, और काफी सारी कंट्रीज उसको टोकनाइज करके उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एसेट ओनरशिप को इन रियल टाइम, ताकि जो भी फ्रॉड्स है ट्रेडिशनली जो एग्जिस्ट करते हैं हमारे एसेट ओनरशिप के रिलेटेड या सेटलमेंट्स के रिलेटेड, वो सारी रियल टाइम और इंस्टेंट हो जाए। एंड देन हम आते हैं एनएफटीज। तो एनएफटीज जो है एक तरीके का डिजिटल एसेट है। द डिफरेंस, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन एन NFT and cryptocurrencies. NFT is a type of cryptocurrency, but NFT is very unique. मतलब हर एसेट की एक यूनिक आइडेंटिटी होगी। जैसे अगर एक बिटकॉइन है तो बिटकॉइन तो सेम ही है, 21 मिलियन बिटकॉइंस, बट जो हर NFT होगा वो NFTs जो है टोटली डिफरेंट है।
एंड देन स्टेबल कॉइन्स एंड CBDCs। अभी जैसे आपको पता होगा कि काफी सारे लोग क्रिप्टो करेंसीज में USDT यूज करते हैं, टेथर यूज करते हैं, USDC यूज करते हैं, राइट। वो बेसिकली जो एक स्टेबल फॉर्म ऑफ करेंसी है। तो जो टेथर है इज लाइक अ 1:1 रिप्रेजेंटेशन ऑन द ब्लॉकचेन, मतलब स्टेबल है। तो आज की डेट पे अगर मुझे डॉलर का एक्सेस चाहिए तो मैं बिटकॉइन के थ्रू मैं टेथर ले सकता हूं विदाउट गोइंग टू एनी बैंकिंग चैनल्स, एंड आई कैन गेट एक्सेस टू टेथर। एंड देन CBDC विच इज इशूड and regulated by the government, right? So how cryptocurrencies are basically different? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट, जो सिमिलैरिटी है बिटवीन क्रिप्टो करेंसी एंड NFT इज दैट प्रोग्रामेबिलिटी। मतलब मैं इसको कोड कर सकता हूं, मैं अलग अलग तरीके के एसेट्स बना सकता हूं, एक इमेजिनरी एसेट्स बना सकता हूं। जैसे हमारा मेटावर्स का सेशन था, राइट, तो मेटावर्स में अगर मेरे अवतार के पास अगर मुझे एक वॉलेट देना है, तो मैं प्रशांत के ही रिलेटेड या सुधीर के ही रिलेटेड या कोई भी एक पर्सन के रिलेटेड में अलग अलग तरीके के क्रिप्टो करेंसीज बना सकता हूं, अलग अलग तरीके के एसेट्स बना सकता हूं, जो कि एक मेरा डिजिटल रिप्रेजेंटेशन हो। तो जो प्रोग्रामेबिलिटी वाला फैक्टर है ये इतना डायनामिक है कि जब आप इन्वेस्टिगेशन करोगे आपको अलग अलग तरीके के स्कैम्स दिखेंगे, या अलग अलग तरीके की लेजिटिमेसी भी दिखेगी, अलग अलग सिनेरियोज दिखेंगे। तो ये प्रोग्रामेबिलिटी वाला जो फैक्टर है इसको आप मतलब प्लीज अच्छे से समझिएगा, बिकॉज इसकी बहुत अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज एक एसेट बनाया या मैंने क्रिप्टो करेंसी बनाई और वो वहीं खत्म हो गई। मैं उसके ऊपर प्रोग्राम कर सकता हूं, मैं उसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरीके के यूज केसेस बना सकता हूं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन वाला पार्ट, तो जिसकी वजह से हमें ये एसेट को ट्रैक करना मुश्किल है, बट कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि मैं ब्लॉकचेन नेटवर्क पे देख सकता हूं। अगर मुझे सिर्फ एक छोटी सी चीज पता हो, या तो वॉलेट एड्रेस पता हो या तो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पता हो, वो मैं आपको डेमो में बताऊंगा, तो जिससे हम इजीली क्रैक कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी ट्रेडिशनली फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो आप क्या करते हैं कि आप बैंक्स के पास जाते हैं, आप उन्हें लेटर्स इशू करते हैं कि राइट कि हमारे पास ये क्वेरी आई है, प्लीज इसके रिगार्डिंग मुझे सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दीजिए। बट यहाँ पे एक चैलेंज है ट्रेडिशनल वे में, चैलेंज ये है इंटरऑपरेबिलिटी का। मतलब अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर फंड्स गया है तो दूसरे बैंक के पास क्लैरिटी नहीं होती कि वो पैसा जो है कैसे आया है, कहां से आया है, किसके पास से आया है, राइट, ओरिजिन क्या है। बट ब्लॉकचेन के अंदर में आप ओरिजिन देख सकते हैं। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन फैक्टर है एक्चुअली हम उसको अपने एडवांटेज के लिए कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आगे डेमो में कवर करूंगा। ओपन सोर्स एक बहुत डायनामिक चीज है यहाँ पे, जिसकी वजह से इसकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। सपोज अगर किसी को भी, चाहे कोई एथिकल हैकर हो, डेवलपर हो या स्कैमस्टर हो या कोई भी हो, वो इसको यूज करके अलग अलग तरीके के एसेट्स बना सकता है, अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर बना सकता है, टेक्नोलॉजी बना सकता है। और ओपन सोर्स की वजह से काफी सारे लोग जुड़ते भी है, क्योंकि मुझे कंट्रीब्यूट करना मेरे लिए इजी है। और दूसरी चीज ये है कि जो टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा ओपन सोर्स होगी उसकी सिक्योरिटी और उसकी डेवलपमेंट उतनी ज्यादा फास्ट होगी, बिकॉज यहाँ पे एक कंपनी काम नहीं कर रही माइक्रोसॉफ्ट जैसी, यहाँ पे वर्ल्ड में हजारों लोग काम कर रहे हैं जो ये टेक्नोलॉजी को आगे लेके जा रहे हैं, राइट। एंड देन एक और एक इंटरेस्टिंग चीज है जिसकी वजह से इसकी एक्सेप्टेंस बहुत फास्ट बढ़ रही है, वो इंसेंटिवाइजेशन। जैसे अगर आपने देखा होगा कि जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन लोग क्यों माइनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को रिवॉर्ड मिलता है। सिर्फ मुझे एक कंप्यूटर लगाना है या मुझे एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है और इंटरनेट को कनेक्ट करना है, तो जितने ज्यादा लोग यूज करेंगे मुझे उतनी ज्यादा वहां पे ट्रांजैक्शन फी मिलेगी, और वो जो ट्रांजैक्शन फी है वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो जो यहाँ पे जो इंसेंटिवाइजेशन का फैक्टर है कि बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि सबको ये नेटवर्क से जुड़ने के लिए और सपोर्ट करने के लिए, राइट। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफिकली हाई सिक्योरिटी। मतलब अगर कोई भी सिक्योरिटी तो नहीं, अगर सपोज मैं आज की डेट पे एग्जांपल लूं, जैसे सुबह हमने सुना था कि रेलवे पे हैक होता है, राइट। इंडियन रेलवेज पे अगर हैक हो रहा है तो कंपैरेटिवली इजी इसलिए क्योंकि इंडियन रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेंट्रलाइज्ड है, मे बी वो 3 4 5 डेटा सेंटर्स में रन कर रहा होगा। तो अगर मैं एक हैकर हूं और मुझे कहीं घुसना है तो मुझे सिर्फ इतना पता है कि 4-5 नेटवर्क है इंडियन रेलवेज के, मुझे वहां जाना है। आप इन्हें बिल्डिंग समझ लीजिए, और मैं एक बिल्डिंग में अटैक करूंगा तो कोलैप्स हो जाएगा। बट यहां पे अगर आपको इसको कोलैप्स करना है तो आपको सबको एक साथ हैक करना होगा, बिकॉज यहां पे जो भी डेटा का कॉपी है वो सब लोगों के पास है, वो सब माइनर्स के पास है। और वो माइनर्स इसलिए ये चीज कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इंसेंटिव मिल रहा है, राइट, कि उन्हें पैसे मिल रहे हैं कि अगर मैं डेटा अपने पास स्टोर करूंगा तो मेरे पास एक मॉनिटरी रिवॉर्ड सिस्टम है। तो जिसकी वजह से एसेंशियली हो क्या रहा है
कि इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं और सबके पास ये पूरे ट्रांजैक्शन का कॉपी और डेटा है, तो मैं अगर किसी को जाके अगर मैं किसी को गिरा भी दूं तो मैं नेटवर्क को मैं नहीं रोक सकता, क्योंकि ये नेटवर्क जो है पूरी वर्ल्ड वाइड हजारों लाखों की संख्या में एक्चुअली फैला हुआ है। तो जो सिक्योरिटी और जो इंसेंटिवाइजेशन है ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे फैक्टर है, बिकॉज कि यहाँ पे अगर मुझे कोई भी चीज को ट्रैक करना है या कोई भी नेटवर्क को गिराना है वो मेरे लिए पॉसिबल है ही नहीं। तो हम ये देखेंगे कि हम इसे कैसे ट्रैक कर सकते हैं, राइट, एंड हाउ वी कैन एक्चुअली गो टू द ऑरिजिन्स ऑफ इट। नाउ टू समराइज, अभी हर क्रिप्टो एसेट्स चाहे एनएफटीज हो गया उसमें ये बेसिक 6 चीजें होती है जो हमें ध्यान रखना है, राइट। एक तो वॉलेट्स हो गए आपके, मैं वॉलेट्स बताऊंगा लाइव डेमो में। एक आपकी पब्लिक की हो गई और प्राइवेट की हो गई। आप लोग को पब्लिक की और प्राइवेट की के बारे में डिफरेंस तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, राइट। थर्ड तो एक हो गया ट्रांजैक्शंस। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो एक ओपन लेजर और एक ओपन फॉर्मेट में स्टोर होता है, जिसे हम एक्चुअली ट्रैक कर सकते हैं अगर हमें पब्लिक की पता हो तो, राइट। और एक चीज माइनिंग है जहां पे इंसेंटिवाइजेशन है, और एक यूनिवर्सल लेजर है विच इज अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, जहां से मैं सारी ट्रांजैक्शंस और सारा डेटा देख सकता हूं। नाउ काफी सारे इन्वेस्टिगेशंस ऐसे भी होते हैं कि जहां पे ये सारी चीजें ओपन सोर्स नहीं है। मतलब जैसे बिटकॉइन है एक ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है, बट काफी सारे लोग जो है अपना खुद का प्राइवेट ब्लॉकचेन भी बना सकते हैं, राइट। जैसे कोई हैकर ग्रुप हो गए, उन्होंने अपना एक प्राइवेट ब्लॉकचेन बनाया और वो ब्लॉकचेन सिर्फ उन्हीं के या वो क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक 20-25 लोगों के ग्रुप में ही सर्कुलेट हो रहा है। तो वो चीज को जो ट्रैक करना है वो एक्चुअली काफी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपको उसके लिए ये आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि आईपी उनका कहां से आया। अगर आप आईपी देखने जाओगे तो लोग वीपीएन यूज करेंगे, वो कंटिन्यूअसली बाउंस होता रहेगा। तो जो प्राइवेट ब्लॉकचेन्स है उन्हें ट्रैक करना एक्चुअली काफी डिफिकल्ट है, अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई कॉन्क्रीट क्लू ना हो। और जो काफी सारे जो जिन्हें मतलब जो हैकिंग ग्रुप्स है अराउंड द वर्ल्ड, वो लोग अपने प्राइवेट ब्लॉकचेन्स बना रहे हैं। दे आर डेवलपिंग मतलब अपने खुद के इंटर कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो कि बेसिकली क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर्ड है। जैसे आपने मतलब जस्ट टू गिव एन एनालॉजी, हमने वर्ल्ड वॉर टू में जर्मन्स एनिग्मा यूज करते थे, राइट। जो एक तरीके का उनका कम्युनिकेशन सिस्टम था जो कि इतना हाईली सिक्योर्ड था क्रिप्टोग्राफिकली कि उसे तोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, राइट। तो यूके सर एलन ने बेसिकली क्या किया कि उन्होंने एक्चुअली पूरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस यूज करके ये रियलाइज किया कि भाई अगर जर्मनी 10 कंप्यूटर्स यूज कर रहा है इसे रन करने के लिए, तो हम 100 यूज करेंगे और हम मैथमेटिकली इसको हम एक एक चीज को बिट बाय बिट हम उसको तोड़ेंगे। तो प्राइवेट ब्लॉकचेन्स को अगर आपको क्रैक करना है तो आपको इसी टाइप की कंप्यूटिंग चाहिए कि जिसे हम ब्रूट फोर्स कंप्यूटिंग बोलते हैं, राइट। तो विच बिकम्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक। नाउ कमिंग टू द प्राइवेट ब्लॉकचेन, दे आर इजी, दे आर ट्रांसपेरेंट, दे हैव ब्लॉक एक्सप्लोरर्स। तो आप एक सिंगल ट्रांजैक्शन आईडी या वॉलेट एड्रेस के साथ आप चीजें काफी ट्रैक कर सकते हो। एंड दीज आर द मेजर नेटवर्क्स। तो दो तरीके के नेटवर्क्स हैं, एक लेयर 1 लेयर 2। लेयर 1 आपका बेसिकली बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डानो, स्टेलर, जिनके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है खुद का, जिनके पास खुद के सर्वर्स है, वो लेयर 1 नेटवर्क्स हो गए। और जो लेयर 2 हो गए, जो ये लेयर 1 के ऊपर बिल्ड हो रहे हैं, जो ये लेयर 1 को सपोर्ट करते हैं बेसिकली। तो अलग अलग तरीके के काफी तरीके के ब्लॉकचेन्स है जहां पे एनएफटीज और एसेट्स इशू होते हैं। अब इसके अंदर भी अब काफी सारे टोकन स्टैंडर्ड्स है। अगर मैं जैसे ERC-20 की बात करता हूं, ये फंजिबल टोकन्स है। जैसे आपका तेदर हो गया एक ERC-20 टोकन है, आपका सर्कल हो गया एक ERC-20 टोकन है, आपका इथेरियम हो गया एक ERC-20 टोकन है। वो उनकी सप्लाई लिमिटेड होती है बट वो सब एक ही एसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक टोकन स्टैंडर्ड है जो कि एनएफटीज में यूज होता है, जिसे हम बोलते हैं ERC-721 टोकन स्टैंडर्ड। तो जो है नॉन फंजिबल है ये, जैसे कि इसके अंदर हर एसेट का एक यूनिक आइडेंटिटी है, इसलिए हमें इसे नॉन फंजिबल का है। तो दैट्स अ की डिफरेंस बिटवीन एन एनएफटी एंड अ क्रिप्टो करेंसी, फंजिबिलिटी फैक्टर। नाउ जस्ट टू समराइज what is exactly an NFT? NFT is a digital representation of the asset. No two NFTs can be same. Every NFT is different. Every NFT has a unique identity. And NFTs cannot be exchanged like a regular currency. मतलब मैं NFTs को कोई exchange में जाके मैं trade नहीं कर सकता। NFT मोस्टली ट्रेड होते हैं मार्केट प्लेसेस में, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जैसे OpenSea हो गया, Rarible हो गया, फाउंडेशन हो गया।
जो एक डेडिकेटेड NFT मार्केट प्लेस है, समथिंग लाइक Amazon, जहाँ पे मैं मेरा वॉलेट कनेक्ट कर सकता हूँ और उसे जाके ट्रेड कर सकता हूँ। तो NFTs की जो ट्रेडिंग होती है वो एक्सचेंजेस में नहीं होती। तो आप अगर कभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आपको अगर बोलता है कि किसी ने बोला कि मैंने ये NFT को एक एक्सचेंज में अगर जाके सेल किया है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज NFTs ट्रेड नहीं हो सकती एक्सचेंजेस में। नाउ NFTs का एक और एक बहुत बड़ा यूज केस है जो कि है एसेट ओनरशिप एंड रिप्रेजेंटेटिंग द ओनरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। नाउ कमिंग टू हाउ अ पर्सन कैन एक्वायर NFTs, राइट? तो NFT के एक्चुअली 3 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज जो है मिंटिंग। तो जैसे हम क्रिप्टो करेंसीज को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज करके मिंट करते हैं, वैसे ही हम NFTs को भी हम मिंट करते हैं। हम मतलब इथेरियम हो गया, चाहे सोलाना हो गया, कोई भी ब्लॉकचेन हो गया, मैं वहां पे जाऊंगा, मैं एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा और मैं वहां पे जाके गैस फी पे करूंगा और इथेरियम पे करूंगा, राइट, टू मिंट एन NFT। तो वहां से मेरी NFT मिंट होगी। तो NFT के अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अभी अगर आपको कोई भी NFT के बारे में जानना है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे आप देख सकते हैं हाई लेवल पे, मैं उसके बारे में भी आपको डेमो दूंगा। सेकेंड हो गया उसके बाद ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन कहाँ होता है? तो Amazon जैसे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस बने हुए हैं जहाँ पे NFTs के ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे ओपन सी हो गया, रेरेबल हो गया। तो मैं आपको एक बार डेमो दूंगा। और जो थर्ड फेज है वो है सेलिंग या बर्निंग ऑफ एन NFT। तो मैं अगर जैसे ही एक NFT की ओनरशिप X से Y को ट्रांसफर करता हूं, तो हो सकता है कि NFT एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, NFT कंप्लीटली बर्न हो जाए। या ये भी हो सकता है कि NFTs अगर X से Y को ट्रांसफर हुआ है तो Y से Z के पास कैसे गया है, इसको भी आप कंप्लीट ट्रेस कर सकते हैं अगर ये पब्लिक ब्लॉकचेन पे है तो ये थोड़े सक्सेस स्टोरीज है जहां पे NFTs का यूज हुआ है। नाउ द ट्रांजैक्शन फ्लो, राइट? तो एक तो हमारे पास वॉलेट है, मैं वॉलेट यूज करूंगा। पहले वॉलेट में जाके अपनी आईडी बनाऊंगा। उसके अंदर मैं बेसिकली अगर मैं इथेरियम यूज करना चाहता हूं तो मेरे पास इथेरियम होना चाहिए, क्योंकि मैं ट्रांजैक्शन करूंगा मोस्टली इथेरियम पे, राइट? तो हर ट्रांजैक्शन के पीछे मुझे फी देना पड़ता है, विच इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट to the network, and because this fee is distributed to the miners. Second, once the transaction is initiated, of course there is a verification process कि वेरीफाई करना भी जरूरी है कि ये पर्टिकुलर एक एसेट एग्जिस्ट करता है या नहीं, और जो मैंने ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया है वो वैलिड है या नहीं। तो दैट इज अगेन रन बाय माइनर्स, जो कि वेरीफाई करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन बेसिकली वैलिडेटेड है। आफ्टर द वैलिडेशन इज डन, the contracts, crypto assets, everything basically becomes part of the blockchain network. तो ये उसके बाद एक पूरा ओपन सोर्स लेजर पे आ जाएगा जहां पे मैं ट्रांजैक्शन आईडी से या पब्लिक एड्रेस से मैं इसे ट्रैक कर सकता हूं। एंड देन वंस द ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल, दिस इज एक्चुअली एडेड टू द ब्लॉक, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड blockchain. And there is a process of how the transaction is also signed. तो जनरली इसमें हैकिंग काफी होता है, बट मुझे एक प्राइवेट की चाहिए और एक पब्लिक की चाहिए। तो मेरा जो पब्लिक की है, आप ये समझ लीजिए कि एक मेरी ओपन सोर्स आइडेंटिटी है जो कि ब्लॉकचेन में एग्जिस्ट करती है, तो इसके बारे में सबको पता होगा। और प्राइवेट की जो है मेरा पासवर्ड है। अगर जैसे ही मेरा अगर कोई भी मुझे ट्रांजैक्शन इनिशिएट करना है मेरे वॉलेट से, मुझे साइन करना होगा, राइट, जिसे हम डिजिटल सिग्नेचर्स बोलते हैं। दैट कैन हैपन विथ एसेंशियली विथ माई private key, and after the transaction is only verified and signed with my private key, transaction can happen. तो अगर कभी कोई इन्वेस्टिगेशन आती है जहां पे कोई बोलता है कि मेरा वॉलेट हैक हो गया है, ऐसे हो गया, पॉसिबिलिटीज हैकिंग की कम है अनलेस एंड अनटिल उसने अपना पासवर्ड शेयर किसी से नहीं किया हो, या अगर उसने अपना पासवर्ड अगर लैपटॉप में रखा है, कोई ऐसी जगह पे रखा हो जहां पे उसके सिस्टम्स या डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज है, तभी हैकिंग की पॉसिबिलिटीज होती है। अदरवाइज हैक करना मुश्किल है, राइट? तो आप इसे थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। ये है ट्रांजैक्शन आईडी। तो जैसे ही हमारा एक कोई भी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है, जैसे अगर हम कोई बैंक से अगर हम पेमेंट इनिशिएट करते हैं तो हमें एक UTR कोड मिलता है, राइट, जो कि हमारे लिए ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर है। सिमिलरली हमें ब्लॉकचेन्स में एक ट्रांजैक्शन आईडी मिलता है जिसे हम एक हैश बोलते हैं। तो हम ये हैश को यूज करके वो कंप्लीटली वो NFT या वो क्रिप्टो एसेट को हम कंप्लीटली ट्रैक कर सकते हैं, हम उसे कंप्लीटली ट्रेस कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे मैं आपको डेमो में बताऊंगा। सो एनी क्वेश्चंस सो फार बिफोर वी मूव टू द डेमो? यस प्लीज। ओके, तो आपको तो ब्लॉकचेन्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं एसेंशियली। एक तो लेयर 1 होता है और लेयर 2 होता है।
तो जो लेयर 2 ब्लॉकचेन, लेयर 1 ब्लॉकचेन्स है, उनके पास खुद की इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, उनके पास खुद के माइनर्स होते हैं एसेंशियली, और जो लेयर 2 होते हैं उनके पास माइनर्स नहीं होते, वो लोग लेयर 1 के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल इथीरियम है, राइट? इथीरियम लेयर 1 है क्योंकि इथीरियम के पास माइनर्स है, उनके पास खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है और खुद का ब्लॉकचेन भी है। लेयर 2 सिर्फ ब्लॉकचेन होता है, उनके पास माइनर्स या इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकिंग नहीं होती। तो ये मेजर डिफरेंस है लेयर 1 और लेयर 2 में। जैसे मैटिक, पॉलीगॉन, ओके, सो पॉलीगॉन इज लेयर 2 क्योंकि पॉलीगॉन ऑपरेट्स ऑन द टॉप ऑफ इथीरियम, राइट? whereas इथीरियम इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर। इथीरियम के पास अगर एक बेसिक सी चीज है, अगर मुझे कोई भी ट्रांजैक्शन करना है, वो ट्रांजैक्शन मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे सर्वर चाहिए, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लेयर 1 के पास होता है, राइट? बट लेयर 2 इसलिए एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज लेयर 1 के साथ चैलेंजेस है। अभी जैसे चैलेंजेस ये है कि अगर इथीरियम को या कोई भी ब्लॉकचेन को अगर इतने सारे लोग एक साथ यूज करने लगे, सपोज आप ये इमेजिन करिए 10,000, 20,000, 50,000 लोग एक साथ अगर यूज करने लगते हैं, तो वहां पे ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो वो ट्रैफिक जैम जब होता है, उसके चैलेंजेस ये होते हैं कि ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता। तो जो लेयर 2 होते हैं उनका काम ये है कि ये जो ट्रैफिक जैम है इसको प्रिवेंट करना। तो लेयर 2 की अपनी खुद की टेक्नोलॉजी है जो ये मेक श्योर करते हैं कि ट्रैफिक जैम नहीं लगे। जैसे हम फॉर एग्जांपल कभी हम किसी को कोई हम ऐप यूज कर रहे हैं, हम कभी यूपीआई यूज कर रहे हैं, तो हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होता। इसका रीजन सिर्फ ये है मेजरली कि क्योंकि वहां पे ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, आपसे पहले हजारों लोग यूज कर रहे हैं, बट यूपीआई की सिर्फ हैंडल करने की कैपेसिटी सिर्फ 60-70,000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड है। वैसे ही ब्लॉकचेन्स की भी एक अपनी ट्रांजैक्शन हैंडलिंग कैपेसिटी होती है, which is actually ranging from like 20 to 40-50,000 transactions per second. जैसे ये ट्रांजैक्शन लिमिट क्रॉस हो जाती है तो वहां पे ट्रैफिक जैम लग जाता है, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। तो मेजरली जो लेयर 2 ब्लॉकचेन्स है उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये लेयर 1 ब्लॉकचेन को ये लोग फास्ट बनाएं, सिक्योर्ड बनाएं, इनको स्केलेबल बनाएं ताकि ट्रैफिक जैम नहीं लगे। आई होप इट्स क्लियर। एनी अदर क्वेश्चंस? सॉरी, right? Yeah, please. ओके, तो हाँ हाँ श्योर। तो इसमें बेसिकली देयर इज अ क्लासिफिकेशन। एक तो ये है कि एक ERC-20 है, तो मतलब जैसे कि आपका इथीरियम हो गया या बिटकॉइन हो गया, दे आर फंजेबल, मतलब इनकी एक यूनिक आइडेंटिटी नहीं है, तो ये एक सिंगल आइडेंटिटी है, उस पर ये चलते हैं। तो दिस इज लाइक अ ERC प्रोटोकॉल। ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स हर ब्लॉकचेन के ऊपर अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। तो प्रोटोकॉल्स कोई स्टैंडर्ड नहीं है क्योंकि ये प्रोटोकॉल्स को उनकी डेवलपमेंट टीम बनाती है। जैसे अगर मैं रिपल की बात करूं तो रिपल की खुद की डेवलपमेंट टीम है, उनका खुद का प्रोटोकॉल होगा, उनका खुद का स्टैंडर्ड होगा। तो एसेंशियली प्रोटोकॉल इज लाइक अ रूल्स हाउ और रेगुलेशन की ये नेटवर्क कैसे ऑपरेट करेगा। बट इसके ऊपर काफी सारे एनहांसमेंट्स होते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि एक जो टेक्नोलॉजी है ये स्केल होता रहे, ये ग्रो होता रहे। तो ये एग्जांपल्स है, बट ERC-20 जो है इट्स अ मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल बिकॉज जितने सारे ब्लॉकचेन्स हम देख रहे हैं, राइट, मोस्टली सब इथीरियम से इंस्पायर्ड है। तो वो मोस्टली उन्होंने सबने इथीरियम को ही कहीं ना कहीं रेप्लिकेट किया है फ्रॉम अ प्रोटोकॉल स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू। अभी इसके अंदर जो ERC-721 है, दैट प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट्स NFTs। तो ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस ये है आइडेंटिटी का फैक्टर, क्योंकि ERC-20 के एसेट्स की एक यूनिक आइडेंटिटी नहीं होती हर एसेट की। सपोज अगर $1 है, $2 है, $3 है, सबकी आइडेंटिटी सेम है US डॉलर।
बट ERC 721 में सबकी आइडेंटिटी डिफरेंट है। अगर ये $1 है तो इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी USD1, अगर $2 है तो इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी $2। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये सबसे बड़ा फैक्टर है। बट आप ये अंडरस्टैंड करिए कि प्रोटोकॉल्स आर रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो हर ब्लॉकचेन का इट्स वेरी हाईली टेक्निकल विच बेसिकली कंबाइंस ERC20 एंड ERC 721। तो जैसे मार्केट प्लेस है, अगर मुझे मार्केट NFT का मार्केट प्लेस है, मुझे जाके NFT परचेज करना है, तो मुझे परचेज करने के लिए कुछ मुझे सेल करना पड़ेगा, कुछ मुझे एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो मैं जो एसेट एक्सचेंज करूंगा वो होगा मेजरली ERC20, और उसके अगेंस्ट में जो मुझे जो एसेट मिलेगा वो मिलेगा NFT जो होगा ERC 721। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसे ERC 1155 का नाम दिया गया। राइट, एनी अदर क्वेश्चंस? No, NFT is not a subset. NFT is a subset of cryptocurrency. Yeah, but NFTs are different totally than utility tokens. जैसे आपका इथीरियम है, $, है, ये एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट है। करेक्ट, यू कैन सी अ डेरिवेटिव बट इट्स नॉट अ सबसेट। No. Bitcoin itself, you will call it. No, so Bitcoin doesn't have ERC20. Ethereum has ERC20. Bitcoin का कोई टोकन स्टैंडर्ड नहीं है, Bitcoin सिर्फ केवल Bitcoin है। इथीरियम के टोकन स्टैंडर्ड्स है, रिपल के टोकन स्टैंडर्ड्स है, स्टेलार के, बाकी सब क्रिप्टो करेंसीज के अपने टोकन स्टैंडर्ड्स है एक्सेप्ट बिटकॉइन। This is for Ethereum. Everything. या दिस इज मेजरली इथीरियम, क्योंकि इथीरियम इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड ब्लॉकचेन एंड नेटवर्क। तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द डेमो, तो मेजरली देयर आर लॉट ऑफ वॉलेट्स। तो एक मेजरली सब मेटामास्क यूज करते हैं बिकॉज इट्स अ मोस्ट पॉपुलर वॉलेट एंड ऑल्सो इट इज सपोर्टेड बाय द इथीरियम कम्युनिटी। तो अगर मुझे कोई भी फर्स्ट मुझे NFT मिंट करना होगा, फिर मैं परचेज करूंगा, फिर मैं सेल करूंगा। तो मुझे मिंट करने के लिए पहले मुझे खुद का वॉलेट चाहिए होगा। तो मैं मेटामास्क पे जाके अपना एक वॉलेट बना सकता हूँ। लाइक जस्ट फॉर डेमो सेक मैं एक कुछ भी पासवर्ड डाल देता हूँ उसमें। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक सीक्रेट रिकवरी फ्रेज है विच इज योर ओ सॉरी एक बार सर, यहाँ पे ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है डेमो। No, it's showing only the. डेमो क्रोम में आ जाएगा सर। एक्सटेंडेड पे है, एक्सटेंडेड को डुप्लीकेट कर डुप्लीकेट छोड़ दो। वायर हाँ आ गया। हैंग हो गया। तो ठीक है, लेट्स। तो दिस इज अ मेटामास्क, मोस्टली सब मेटामास्क यूज करते हैं। तो आई कैन डाउनलोड मेटामास्क फ्रॉम इंटरनेट, इट्स एन ओपन सोर्स एप्लीकेशन। तो आफ्टर आई डाउनलोड मेटामास्क I have to set it up. So it's an app which is there on my Google Chrome or mobile app anywhere. So now my wallet is successful.
तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक NFTs है, तो अगर मेरे जो भी NFTs में मैं परचेज करूंगा वो NFT मुझे NFT के सेक्शन में दिखेगा। यहाँ पे एक्टिविटीज है, तो मैंने जितने भी ट्रांजैक्शन किए हैं या जो भी किया है, मेरी कंप्लीट लॉग हिस्ट्री मुझे अपनी एक्टिविटीज पे दिखेगी। नाउ हियर आई कैन बाई सेल क्रिप्टो करेंसी डायरेक्टली, आई कैन सेंड इट टू एनीवन। अगर मुझे किसी को कोई क्रिप्टो करेंसी भेजना है तो मुझे उसका एड्रेस डालना होगा, पब्लिक एड्रेस, जो कि एक क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर्ड 0x एक कॉम्बिनेशन होगा, तो मैं वहां पे डाल के वो एसेट किसी को भी सेंड कर सकता हूँ, इंक्लूडिंग NFTs। और ये मेरा पोर्टफोलियो, तो मेरे पास जितने भी क्रिप्टो करेंसीज या जितने भी एसेट्स है वो सबका वैल्यूएशन क्या है वो मुझे मेरे पोर्टफोलियो सेक्शन में दिखेगा, राइट। नाउ लेट्स गो टू दी ओपन सी। तो ओपन सी इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर मार्केट प्लेस और Amazon फॉर बेसिकली बाइंग, सेलिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ NFTs। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने सारे NFTs है, राइट। तो मेजरली NFTs जो अभी 99.99% NFTs की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि NFTs एक तरीके के 99% NFTs एक इन्वेस्टमेंट स्कैम होते हैं और इनकी वैल्यूएशन जो है एक्चुअली फ्लक्चुएट होती रहती है। तो वो काफ़ी सारे डेवलपर्स या हैकर ग्रुप क्या करते हैं कि वो एक NFT क्रिएट करेंगे, उसको थोड़ा ऊपर तक लेके जाएंगे, रिटेल ऑडियंस आएंगे, देखेंगे कि यार एक की चीज़ 100 हो गई, वो 100 पे खरीदेंगे, फिर उसको एकदम अबैंडन करके चले जाएंगे। तो होता है, बट जो थोड़े NFTs है जिनकी वैल्यूएशन मिलियंस ऑफ डॉलर्स में, आपने देखा होगा कि किसी ने एक NFT था बीपल जिसको 69 मिलियन डॉलर्स में खरीदा था, राइट। किसी ने कोई $2 मिलियन पे कोई NFT को खरीदा था। तो ये NFTs जो एक रियल वैल्यूएशन होल्ड करते हैं बिकॉज इनके पीछे एक रियल एसेट है। रियल एसेट एक पेंटिंग है, रियल एसेट एक बहुत वैल्यूएबल पीस ऑफ आर्ट है जो उसको डिफाइन कर रहा है। और NFTs को सिर्फ हम एक डिजिटल अवतार या एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं ऑन दी इंटरनेट, राइट। हाँ 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 श्योर। हाँ, तो अभी देखिए रियल वर्ल्ड में सपोज आप अज्यूम करिए कि एक पेंटिंग है, हमारी MF हुसैन की पेंटिंग है, राइट। अभी आप ये देखिए कि MF हुसैन की पेंटिंग ट्रेडिशनल वर्ल्ड में इसके कितने चैलेंजेस है। फर्स्ट चैलेंजेस ये है कि ये पेंटिंग को मैं इजीली मूव नहीं कर सकता। अगर मुझे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाना है तो मेरे लिए लॉजिस्टिक्स बहुत बड़ा चैलेंज है, चोरी होना बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर ये कहीं फिजिकल प्लेस में है तो इसको आग लगना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट। और किसी को ओनरशिप ट्रांसफर करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मुझे एक ऑथेंटिसिटी एस्टैब्लिश करना कि ये पेंटिंग सर MF हुसैन ने बनाई है कि नहीं, एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये ट्रेडिशनल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है, राइट। तो इसको NFTs ने सॉल्व किया है। NFTs ने उसको ऐसे सॉल्व इसलिए किया है कि अब आप ये इमेजिन करिए कि इंटरनेट पे या मेटावर्स पे एक MF हुसैन सर की आइडेंटिटी है जो कि रियल MF हुसैन सर है, और उन्होंने अपनी पेंटिंग बना के डायरेक्ट इंटरनेट पे डाल दिया NFTs यूज करके, राइट। उन्होंने एक नया एसेट बनाया इंटरनेट पे। अब आप ये देखिए कि जो भी ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स थे उन्होंने इसको सॉल्व कर दिया, राइट। आज की डेट पे अगर आपको ये चीज पेंटिंग खरीदनी है, इंस्टेंटली आप खरीद सकते हैं। मेरे लिए कोई लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट नहीं है, कोई शिपिंग कॉस्ट नहीं है, कोई इंश्योरेंस का कॉस्ट नहीं है। मैं मेरे MF हुसैन से मैं पेंटिंग डायरेक्टली खरीदा हूं, इसका पूरा ऑडिट ट्रेल है, इसकी पूरी एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है। तो मुझे कोई ऑथेंटिसिटी प्रूफ नहीं करना, मुझे ये अपनी ओनरशिप डिटेल्स प्रूव नहीं करना है कि मुझे NFT या ये एसेट मिला कहां से। दूसरी चीज लॉन्जिविटी, मतलब एक बार अगर कोई भी एसेट ब्लॉकचेन पे आ गया तो वो एसेट फॉर एवर एग्जिस्ट करता है, राइट। जब तक इथीरियम है, जब तक कंप्यूटर्स है, जब तक डेटाबेस है, वो पर्टिकुलर एसेट है, चाहे कुछ आग लग जाए, कुछ भी लग जाए, जब तक ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म नहीं हो जाता तब तक वो एसेट को कुछ नहीं होगा। तो NFTs जब बनाया गया था, इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स है हम उसको कैसे सॉल्व करें डिजिटल वर्ल्ड में, बिकॉज हम मेटा वर्स की तरफ हम मूव कर रहे हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी की बात कर रहे हैं। तो जो रियल वर्ल्ड एसेट्स है हम उनको इंटरनेट पे कैसे रिप्रेजेंट करें यूनिकली, दैट वाज द आइडिया विद द NFTs। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है NFTs के अंदर में, वो मेजरली हाई वैल्यू एसेट्स की होती है जिनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, लाइक हजारों लाखों करोड़ों रुपए पे। तो लोग क्या करेंगे कि सपोज, जैसे हमें ऑब्वियसली पता है कि लोग पेंटिंग्स इसलिए खरीदते हैं क्योंकि पेंटिंग्स का एक अपना एक आर्ट का एक अपना एक ब्लैक मार्केट है, राइट। उसकी वैल्यूएशन कोई डिफाइन नहीं कर सकता, उसकी वैल्यूएशन सिर्फ अंडरग्राउंड मार्केट्स, बायर्स और सेलर्स में होती है। तो लोगों के लिए पैसा छुपाने का एक बहुत ईजी तरीका है। तो
Similarly, but not exactly, NFTs are one of those ways कि जहां पे मैं डिजिटली ये एसेट को मूव कर सकता हूं, ये एसेट को डिजिटली ट्रांजैक्ट कर सकता हूं. तो जो मेरी ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स थी वो तो इससे सॉल्व हो गई. मुझे अगर किसी को भी सपोज एक पेंटिंग गिफ्ट करनी है तो मैं आज की डेट पे कोई फिजिकल पेंटिंग खरीदूंगा, उसे भेजूंगा, इंश्योरेंस कराऊंगा, इतना सब रिस्क लूंगा. यहाँ पे मेरे लिए इतना सिंपल है, मुझे सिर्फ एक देखना है, यहाँ पे इतनी सारी पेंटिंग्स है, कुछ भी देखना है, खरीदना है, पेमेंट करना है, और मैंने किसी को भी भेज दिया, 2 मिनट में उसको ये एसेट पहुंच गई. अगर मुझे सेल करना है, मैं वर्ल्ड के कोई भी कॉर्नर में लेके जाके इसको किसी को भी सेल कर सकता हूँ, राइट. तो मेरे लिए एक्चुअली डिजिटल वर्ल्ड में एनएफटीज ने चीजों को या एसेट मूवमेंट को एक्चुअली काफी सिंप्लीफाई कर दिया. अभी फ्यूचर में आप देखेंगे कि एक घर के जो शेयर्स है या कंपनी के जो शेयर्स है वो भी एक एनएफटी के वे में रिप्रेजेंट होंगे, क्योंकि जितने भी इंटरमीडियरीज आज की डेट पे एग्जिस्ट करते हैं, राइट, ब्रोकर्स, आपके बैंक्स या आपके XYZ जितने भी इंटरमीडियरीज है, वो सबको मैं एलिमिनेट कर दूंगा और ये डायरेक्ट ट्रांजैक्शन मेरा पॉइंट A टू पॉइंट B एकदम इंस्टेंटली हो जाएगा विदाउट एनी डिपेंडेंसी, राइट. तो दिस इज या करेक्ट. हाँ, वर्चुअल है, बट लोग अभी एनएफटीज को रियल वर्ल्ड एसेट्स रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज कर रहे हैं. जैसे फ्रांस में म्यूजियम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, आप 10,000 20,000 इन्वेस्ट कर सकते हो. तो उन्होंने उनको डिवाइड कर दिया. तो उन्होंने क्या किया कि 100 करोड़ के वैल्यूएशन के अगेंस्ट में 10-10 हजार रुपए के शेयर्स निकाल दिए. तो ताकि जो भी दूसरे इन्वेस्टर्स है वो आके सिर्फ 10,000 रुपए देके वो पर्टिकुलर एसेट के ओनर बन जाए. यू कैन बेसिकली इन्वेस्ट. इसका ऑब्जेक्टिव ये था एनएफटीज टू मेक इन्वेस्टिंग इनटू हाई वैल्यू एसेट्स फॉर पीपल टू मेक इजियर. मतलब जिनके पास अगर लो इनकम कैटेगरी का बंदा है वो भी एक महंगी एसेट पे इन्वेस्ट कर सकता है, होल्ड कर सकता है. तो इसके अराउंड वर्ल्ड वाइड, स्पेसिफिकली यूरोप और यूएस में काफी रेगुलेशंस आ रहे हैं. सिक्योरिटीज जो रिस्पेक्टिव रेगुलेटरी बॉडीज है वो लोग एक पूरा प्रोसेस डिफाइन कर रहे हैं कि जहां से ये पूरे एसेट क्लास को रेगुलेट किया जा सके, राइट. तो एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ हाँ करेक्ट. तो हाँ, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि फ्रांस के एक म्यूजियम ने, वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है बट उन्होंने उनके एसेट के एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन बना दिया. अब ये जो एसेट का जो कंट्रोल है फ्रांस की एक रेगुलेटर बॉडी या इंश्योरेंस कंपनी के पास है, राइट. एक वॉल्ट में या एक तिजोरी में, बट उन्होंने इसका एक डिजिटल एसेट रिप्रेजेंटेशन बना दिया ताकि लोग आके इसे खरीद सके, इन्वेस्ट कर सके, ट्रेड कर सके. सी, ट्रेडिशनली जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिच, मिडिल एंड पुअर क्लास में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मिडिल और लोअर मिडिल क्लासेस लोगों के पास या गरीब लोगों के पास इन्वेस्टमेंट का एक्सेस नहीं होता. जैसे कोई पेंटिंग है, मुझे पता है कि ये पेंटिंग आज 1 करोड़ की है, कल को वो 100 करोड़ की हो जाएगी, मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास उतने कैपिटल रिसोर्सेज नहीं है. तो एनएफटीज का ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो सोसाइटी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट गैप है, जहां पे रिच रिचर हो रहे हैं और गरीब लोग मतलब इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, उसको आसान बनाना था ताकि कोई भी बंदा मतलब 10 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सके. तो मैं अगर आज 10 रुपए भी मैं डाल रहा हूं तो मेरे पास एक उसका एक शेयर मिल गया. तो ये बेसिकली आइडिया था एनएफटीज के पीछे. It's like shares of companies. हाँ 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 एग्जैक्टली. बट एडवांटेज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ग्लोबल मूवमेंट है, मतलब मैं किसी को भी भेज सकता हूँ, इसकी सेटलमेंट इंस्टेंट है, किसी को आके वेरीफाई नहीं करना कि ये ट्रांजैक्शन जेन्युइन है या नहीं, मैं कंप्लीटली ब्लॉकचेन पे वेरीफाई कर सकता हूँ. तो मैं आपको बताऊंगा कि आप एक एसेट की मूवमेंट आप कैसे ब्लॉकचेन पे ट्रैक कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन. Will there be physical asset also like something? नहीं, फिजिकल एसेट बेसिकली कस्टोडियन के पास ही है. जैसे इंडिया में अगर हम शेयर्स खरीदते हैं, राइट, तो हम शेयर्स खरीदते हैं तो शेयर्स का फिजिकल कंट्रोल सेबी के पास है, बट आप भी ओन कर सकते हो, मैं भी ओन कर सकता हूँ, कोई भी ओन कर सकता है. सिमिलरली एनएफटीज का आइडिया ये था कि हम एक ग्लोबल कनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं और हमें कोई मिडिलमैन की जरूरत नहीं है. मतलब हमारे ट्रांजैक्शंस, हमारे आइडियाज, हर चीज एकदम ग्लोबल होनी चाहिए विदाउट एनी बाउंड्रीज, विदाउट एनी लिमिटेशंस. सो दैट वाज द आइडिया. आजकल एक बड़ी प्रॉपर्टी का आपको खरीद करेक्ट. हाँ, वो आपके पास रहता है, उसका ओनरशिप आपके पास हो जाती है. हाँ करेक्ट. लाइक दैट. हाँ 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 डेफिनेटली. मतलब
काफी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ पे आप $100 दे के आप एक रिसोर्ट के ओनर बन सकते हो, विच इज अ सिक्योरिटी, विच इज अ रेगुलेटेड सिक्योरिटी। मतलब मैं इंडिया से हूँ तो मैंने $100 मेरे मेटामास्क वॉलेट में मैंने डाला, मैंने कोई भी एक्सचेंज से कोई भी एसेट परचेज कर लिया, कहीं से भी मैंने कोई क्रिप्टो करेंसी परचेज की या बिटकॉइन परचेज किया, वो बिटकॉइन परचेज करने के बाद मुझे अगर $100 यूरोप में इन्वेस्ट करना है और ये एग्जाम्पल ये प्रॉपर्टी का शेयर लेना है तो मैं इंस्टेंट ले सकता हूँ। मुझे सिर्फ मेटामास्क पे जाना है, वो उसे सेंड करना है और वो मेरे पास ओनरशिप इंस्टेंटली आ जाएगी। ये सेफ है? मतलब इसमें दो कैटेगरीज है, रेगुलेटेड, नॉन रेगुलेटेड। अगर आप रेगुलेटेड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली सेफ है, अगर आप नॉन रेगुलेटेड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो अनसेफ है। आपको उसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा, जो भी आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो आप उसके बारे में आप गूगल पे नाम डालोगे, आप देखोगे कि ठीक है इनका लाइसेंस नंबर क्या है, राइट। हर कंपनी का सबका एक अपना रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, हर चीज होता है, तो आपको एज एन इन्वेस्टर वो रिसर्च करना पड़ेगा प्रॉपर बिफोर इन्वेस्टिंग। हाँ, तो अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक NFT है अजूकी, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो मुझे एक NFT की वैल्यू जो है 6.5 इथीरियम है, तो अप्रोक्सीमेटली अराउंड $15,000, 12 to 13 लाख रुपीज, ये सिर्फ एक NFT की वैल्यू है, राइट। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि NFT को मुझे परचेज करना है, तो मुझे पहले परचेज करने के लिए मेरे पास वॉलेट होना चाहिए। तो मैं मेटामास्क वॉलेट को मैंने एक्चुअली इंस्टॉल कर दिया है, बट ठीक है ये नहीं ले रहा, तो मैं यहाँ पे जाके वॉलेट इस ओपन सी और मेटामास्क के सर्वर कहाँ है? ओपन सी बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड है। ओपन सी के सर्वर्स ऑब्वियसली यूएस या AWS में होंगे, बट जो ब्लॉकचेन है या इथीरियम है वो पूरे ग्लोबली स्प्रेडेड है, तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलरली चीज कहाँ है। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कितना कोऑपरेट करेंगे? वो उनके कंट्री के लॉस पे डिपेंड करता है, बट अगर इररेस्पेक्टिव अगर उन्होंने कॉपरेट नहीं किया तो भी तरीका है कि आप एटलीस्ट एक आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये ट्रांजैक्शन कैसे हुआ था। वो मैं आपको बताऊंगा अभी डेमो में। सरकार अगर इनका ये ब्लॉक कर दे URL तो लोग VPN यूज करके एक्सेस करेंगे। सरकार ने ऑलरेडी काफी कुछ ब्लॉक कर रखा है, बट इंटरनेट जब भी एग्जिस्ट करता है देयर आर लॉट ऑफ वेज टू बाईपास इट। तो अगर सरकार को इसे बंद करना है तो एक ही तरीका है कि पूरे वर्ल्ड का इंटरनेट ही बंद करना पड़ेगा। हाँ, बट लोग आज भी इंडिया से टिकटॉक यूज करते हैं VPN यूज करके। मैं काफी लोगों को जानता हूं जिनके पास VPN है और वो लोग टिकटॉक यूज करते हैं। हाँ, मतलब होता है ऐसे, बिकॉज इंटरनेट अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो बेसिक आइडिया ही है फ्रीडम, राइट। तो जहाँ पे लोगों को लगता है कि यार उनकी फ्रीडम और उनकी डेमोक्रेसी स्टेक पे है, दे विल डेफिनेटली बाईपास, राइट। तो एनीवेज मैं अपना मेटामास्क वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट करूंगा और मैं इससे बाई कर सकता हूँ। अभी मुझे देखना है कि ये NFT का पूरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्या है, राइट। तो यहाँ पे मैं अगर जाऊंगा तो मुझे एक ओनर दिखा कि जिसकी आइडेंटिटी वर्गो NFT है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब मुझे ये देखना है कि पर्टिकुलरली ये एसेट को ट्रैक करना है। सपोज ये एसेट किसके पास था, कैसे आया, इसका कंप्लीट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्या है, राइट। तो मैं अगर इसके वॉलेट एड्रेस पे जाता हूँ तो मुझे दिखता है कि इसके पास और भी बहुत सारे NFTs है। तो ये सारा डेटा मुझे ब्लॉकचेन से मिल रहा है। तो अगर आपको ये ट्रैक करना है कि सपोज प्रशांत है, राइट, प्रशांत के पास कितने NFTs है या क्या क्रिप्टो करेंसीज है, तो मुझे सिर्फ उसका वॉलेट एड्रेस चाहिए और मैं वो वॉलेट एड्रेस से सारा डेटा देख सकता हूँ। अगर मुझे और इन डेप्थ में अगर ये डेटा देखना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे आप जो इथीरियम का लोगो देख रहे हो, इससे ये पता चलता है कि ये पर्टिकुलर NFT इथीरियम ब्लॉकचेन पे। तो यहाँ पे इसका एड्रेस है, तो मैं एड्रेस को कॉपी करूंगा, मैं जाऊंगा इथीरियम ईथर स्कैन पे, विच इज अ इथीरियम ब्लॉक एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे जितनी भी ट्रांजैक्शंस है मैं सारी ट्रांजैक्शंस इथीरियम के रिलेटेड देख सकता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं उनका एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो मैं जब अगर देखूंगा तो मुझे ये सारी डिटेल्स आ जाएगी कि ये पर्टिकुलर वॉलेट एड्रेस ने या ये पर्टिकुलर आईडी ने
कितने ट्रांजैक्शंस किए हैं, कितने एनएफटीज ओन किया है, कहाँ से खरीदा, कहाँ से परचेज करा, ये सारी डिटेल, मतलब उसकी सारी जन्म कुंडली आपको इस पे मिल जाएगी। ओके, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इसके पास करीब उसने इतने सारे ट्रांजैक्शंस किए, राइट। ये एक ट्रांजैक्शन हैश है, तो हर, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी मैं ट्रांजैक्शन करता हूँ सबकी एक यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी होती है, तो एक ये ट्रांजैक्शन हैश है। ये एज है, मतलब उसने कब ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन किया, 3 hours 15 minutes अगो, और किसको किया, राइट, कौन से एड्रेस पे इसने ये ट्रांजैक्शन किया। अभी अगर मेरे को और डिटेल्स जानना है ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बारे में, तो मैं ट्रांजैक्शन हैश पे जाऊंगा, तो मुझे यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएगी कि ये ट्रांजैक्शन आइडेंटिटी है, ये बेसिकली ट्रांजैक्शन हुआ था 4 Jan को। इसने बेसिकली एक इथीरियम से दूसरी, एक क्रिप्टो करेंसी से दूसरी क्रिप्टो करेंसी खरीदी थी, और ये वाले एड्रेस को उसने सेंड किया था 2। तो जैसे जो 2 है कि उसने बेसिकली फंड्स किसको भेजा, कहाँ भेजा, तो ये वॉलेट एक आइडेंटिटी है, राइट। अभी काफी सारे लोग क्या करते हैं कि एनएफटीज खरीद लेंगे, परचेज करेंगे, उसको हायर वैल्यू में सेल करेंगे, बट कहीं ना कहीं उन्हें जाके पैसा तो चाहिए, राइट। दे नीड फिएट कैश, दे नीड रुपीज, दे नीड डॉलर्स टू स्पेंड इन रियल मनी। आई ऑब्वियसली कैन नॉट स्पेंड दिस मनी इन द रियल वर्ल्ड। तो लोग क्या करेंगे कि इसको कन्वर्ट करेंगे फॉर सम डॉलर्स यूजिंग अ क्रिप्टो एक्सचेंज। तो कहीं ना कहीं जितने भी फंड्स है कोई ना कोई एक्सचेंज में जाके ही सेटल होते हैं। तो अगर आपको जैसी वो एक वॉलेट आईडी भी मिल जाती है, आप उस पर क्लिक करके आप कंप्लीट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये आपको बेसिकली क्या है, थोड़ा इसमें काफी एनालिसिस करना पड़ेगा, बट एक पर्टिकुलर क्लू से आपको सारी डिटेल्स उसकी मिल जाएगी कि उसने कब परचेज किया, कब सेल किया, किसको ट्रांसफर किया। ऑब्वियसली मैं अगर कोई एसेट किसी को ट्रांसफर कर रहा हूँ, कोई क्रिप्टो करेंसी किसी को ट्रांसफर कर रहा हूँ एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस में, भले ही वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को नहीं पता हो, बट ओनर को तो पता है, राइट। ओनर तो किसी को भी बगैर जाने तो ट्रांसफर नहीं करेगा, राइट। तो अगर कभी आपके पास इन्वेस्टिगेशन आती है तो आप ये डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपकी ये वॉलेट आईडी है, आप यहाँ से आपने कोई चीज एक्स को भेजी है, एक्स पर्सन कौन है, राइट। ये एक्स पर्सन को आपने क्यों भेजा, पर्पस क्या था आपका, हाउ डिड यू एक्वायर दिस एसेट, राइट। अभी काफी सारे लोग होते हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से ही खरीदेंगे, राइट। तो मैं अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से खरीदता हूं तो मैं अपने मेटामास्क पे डालूंगा पहले इथीरियम खरीद के, राइट। तो इथीरियम आएगा मेरे पास कोई एक्सचेंज से, मे बी बाइनेंस से आएगा, मे बी कोई कूकॉइन से आएगा। तो आप वो यहाँ पे देख सकते हो कि वो आया कहाँ से, वो डिपॉजिट हुआ कहाँ से, उसकी ट्रांजैक्शन आईडी क्या है। तो जिससे मेरी इन्वेस्टिगेशन जो है काफी इजी हो जाती है। अभी अगर मुझे और डिटेल्स में जाना है, सपोज मुझे ये देखना है कि ये पर्टिकुलर एनएफटी जो है अजूकी, राइट, ये अजूकी को, इसकी इस अजूकी की बेसिकली जन्म कुंडली क्या है। तो यहाँ पे मुझे इनका एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिख रहा है जहां से इसको क्रिएट किया गया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज करके। तो मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट की सारी डिटेल्स आ जाएगी, राइट, कि इस पे कितने सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं, इसको कब इनिशिएट किया गया था, किसने परचेज करा, क्या क्या वैल्यू पे पर्टिकुलर चीजें ट्रेड हुई है। तो अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बेसिकली ज्यादातर मतलब मूवमेंट ऑफ मनी आपको ट्रैक करना है। तो आप यहाँ पे ये ट्रैक कर सकते हो कि पर्टिकुलर एसेट था उसकी क्या क्या वैल्यू पे ट्रेड हुई है, क्या क्या वैल्यू पे ट्रांजैक्शन हुआ है, किसने किसको सेंड किया है, मतलब आपको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आपको इसको डाउनलोड करना चाहे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, प्योरली ओपन सोर्स है, राइट। और तो यहाँ पे आपकी सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है। तो ऐसे ही सिमिलरली अगर आपके पास कोई केस आए, सपोज सोलाना ब्लॉकचेन पे, क्योंकि सोलाना बहुत पॉपुलर ब्लॉकचेन है, तो ऐसे ही मतलब जैसे ईथर स्कैन है वैसे सोल स्कैन भी है, और सारे ब्लॉकचेन्स मेजरली ऐसे ही काम करते हैं। तो मैं सोल स्कैन पे जाऊंगा, बट इथीरियम का जो ट्रांजैक्शन है वो मैं सोलाना स्कैन पे नहीं देख सकता, क्योंकि इथीरियम एक अपना खुद का ब्लॉकचेन है। तो मुझे अगर सोलाना में ट्रैक करना है तो सोलाना का अपना एक खुद का एड्रेस होगा। वैसे ही सिमिलरली काफी ब्लॉकचेन्स के खुद के एड्रेस होंगे, बट हर ब्लॉकचेन का अपना एक स्कैनर होगा जहां पे आप जाके वो पर्टिकुलर एसेट, एनएफटी या क्रिप्टो करेंसी के बारे में कंप्लीट ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रांजैक्शन एड्रेस या हैश। तो जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक एनएफटीज है, पॉपुलर एनएफटीज स्टेपन है, राइट।
मुझे अगर इसके बारे में जानना है कि कितने सारे लोग इसे यूज कर रहे हैं, इसका प्राइस क्या है वगैरह वगैरह, तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि कहाँ पे ट्रेड हो रहा है, कहाँ पे ट्रांजैक्ट हो रहा है, इसकी आईडी क्या है, एवरी डिटेल्स ऑन एवरी ब्लॉकचेन। सो दिस इज हाउ आप मतलब रियल टाइम पे कंप्लीट ट्रैक कर सकते हो कि ये एसेट क्या है। बट आपके पास एक ट्रांजैक्शन आईडी या पब्लिक की का कुछ एक्सेस होना चाहिए, और सिर्फ आपको एक ब्लॉक एक्सप्लोरर में जाना है, और आप वहाँ पे अगर जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पे उनकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कब हुआ था, फ्रॉम टू, राइट। फ्रॉम मतलब ऑब्वियसली द पर्सन हु हैज इनिशिएटेड अ ट्रांजैक्शन, टू इज द रिसीवर ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो आप यहाँ पे सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो, राइट। तो एनी क्वेश्चंस? मेजरली आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास एक ट्रांजैक्शन आईडी होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलरली कौन से ब्लॉकचेन पे, और आपको सिर्फ उसके ब्लॉक स्कैन में जाना है और वहां पे वो एक ट्रांजैक्शन आईडी डालनी है और वहां से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। बट ऑफ कोर्स आपको अगर और डिटेल में जाना है तो आपको एक्सपर्ट्स चाहिए, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। बट हाई लेवल पे एटलीस्ट आप केसेस अंडरस्टैंड कर सकते हो कि केस का ट्रांजैक्शन फ्लो कैसे है और कितने लोगों के बीच में इसके ट्रांसफर्स हुए या ट्रांजैक्शंस हुए। एनी क्वेश्चंस? सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर इसमें फॉरगेट का ऑप्शन आता है कहीं? अगर आपने प्राइवेट की अगर आप भूल गए तो आपके सारे एसेट्स लूज हो जाएंगे, यू कैन नॉट रिकलेक्ट इट बैक। तो प्राइवेट की इज लाइक योर पासवर्ड, आपको वो ध्यान रखना जरूरी है, और उसका कोई तरीका भी नहीं है कि आप उसे रिकवर कर सकते हो। इम्पॉसिबल है प्राइवेट की रिकवरी करना। हाँ हाँ, वो आपको सेव करके रखना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं है। सॉरी, सो हाँ, अगर जैसे आप विल बनाते हो आपके ट्रेडिशनल एसेट्स के लिए, आपको इसके लिए भी इसकी जो आपकी प्राइवेट की है आपको आपके नेक्स्ट एयर के साथ शेयर करना जरूरी है। अगर आप मर गए तो वो आपके साथ ही चले जाएगी। जैसे एक केस है कैनेडियन एक्सचेंज का, क्वाड्रिगा CX, जिसका फाउंडर एक्चुअली इंडिया। नहीं, वो तरीका कुछ नहीं है, मतलब आपके पास एक, हाँ हाँ, यस 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 यस, हाँ। बट अगर आपने शेयर कर दिया और आपसे उससे लड़ाई हो गई तो वो की यूज करके आपके सारे एसेट चोरी भी कर सकता है, तो आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते उसको। Sorry to interrupt, guys. In the interest of time, can we keep the questions at the end? If it's okay. Yeah. Thanks. Sure. Thank you. Yes, yeah. Yeah, sure. No. हमें वो WhatsApp इस पे कॉन्टेक्ट है। टिल दैट टाइम आप इधर क्वेश्चन एड्रेस कर सकते हैं। हाँ 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 सेट करना। हाँ सेट हो गया, सेट सेट। होप सच में अच्छा रहा। जुड़िए का सबका काम आपको लैपटॉप कनेक्ट कर जुड़िए का ये लगाना जुड़िया जुड़िया सर का कहाँ है PPT? उसमें व्हाट्सएप करना सर, मेरा व्हाट्सएप नहीं है। क्या आपको लिए सर, क्या Till the setting of the devices, you can raise 1 or 2 questions, please. 1 or 2 questions will be entertained, please. Yeah. हाँ, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर क्रिएटेड बाय द डेवलपर्स और द फाउंडर्स ऑफ दैट NFT।
तो जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उसकी एक ऑडिटिंग प्रोसेस होता है और उसमें थोड़े फंक्शंस होते हैं, जैसे कॉल बैक फंक्शन हो गया, कॉल फंक्शन हो गया। अगर वो डेवलपर ने उसमें कॉल बैक फंक्शन डाला है कि जहाँ पे इन केस ऑफ हैक मैं एनएफटीज को रिकलेक्ट कर सकता हूँ, तो वो पॉसिबल है। अगर डेवलपर ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे अगर ये कॉल बैक ऑप्शन नहीं डाला, तो अगर एक बार वो हैक हो गया तो दैट्स लॉस्ट फॉर एवर। तो इसलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो ऑडिटिंग होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ब्लॉकचेन। तो काफी सारे लोग जो लेजिटिमेट चीजें डेवलप कर रहे हैं वो डेफिनेटली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ऑडिट करवाएंगे। हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली। इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट। नहीं नहीं, इंडिविजुअल्स भी डेवलपर्स है, कंपनीज भी डेवलप कर रहे हैं खुद की एनएफटीज, क्योंकि एनएफटीज के बहुत यूज केसेस डेवलप हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको एक पेंटिंग एक एग्जांपल बताया, बट उसके अलावा जैसे आप एक हेल्थ फ्रीक हो, राइट, तो आप इतने स्टेप्स चले हो, आप इतने किलोमीटर्स रन किए हो, तो उसके भी एनएफटीज बना के उसके अगेंस्ट में कंपनीज लोगों को रिवॉर्ड दे रही है। तो जैसे नाइकी ने अपने शूज के एनएफटीज बनाए, तो अगर आपके पास काफी कंपनीज ने अपने ट्रेडिंग कार्ड्स बनाए, जैसे हमारे पुराने जमाने में, मतलब मेरे टाइम पे तो पोकेमॉन के, WWF के ट्रेडिंग कार्ड्स हुआ करते थे, तो उसके ट्रेडिंग कार्ड के एनएफटीज है, तो वो सब मैं डिजिटली ओन कर सकता हूँ। नाउ जो बिगर यूज केसेस है एनएफटीज का, वो कनेक्शन है मेटावर्स के साथ, कि एक अवतार है, अवतार एक, जैसे प्रशांत या कोई भी अवतार है, वो अवतार के पास पैसे चाहिए, वो अवतार के पास ड्रेस चाहिए, वो अवतार के पास वॉच चाहिए, राइट। तो मतलब अलग अलग गेम्स के हिसाब से मेरे हर अलग अलग हंड्रेड्स ऑफ एनएफटीज होंगे जो कि मेरा डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो मैं फ्यूचर में जाके ये चीज़ों को ट्रेड कर सकता हूँ। तो मैं, जैसे मैं आपसे मिला, मैं डिजिटल वर्ल्ड में, और आपने बोला कि है ना यार, ये मेरे को ये शूज अच्छे लगे, या मेरे को ये पर्टिकुलर ड्रेस अच्छी लगी, मुझे ये चाहिए, तो मैं आपके साथ ट्रेड कर सकता हूँ। जैसे काफी सारे ब्रांड्स है, लुई विटॉन और इंटरनेशनल ब्रांड्स, उन्होंने अपने डिजिटल अवतार्स के लिए एनएफटीज बनाए। तो अगर आपका एक डिजिटल अवतार है कोई गेम में, तो आप लुई विटॉन के स्टोर पे जाके पैसे देके आपके डिजिटल अवतार के लिए आप एक क्लोथिंग खरीद सकते हो लुई विटॉन की। तो ऐसे वर्ल्ड के जितने सारे ब्रांड्स हैं वो सब मेटावर्स को लेके काफी एक्साइटेड है और वो अपने अपने एनएफटीज बना रहे हैं। तो हम आने वाले टाइम पे देखेंगे कि थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ एनएफटीज एग्जिस्ट करेंगे फॉर श्योर। Okay, hello everyone. ये नहीं चाहिए, इधर ही होना। Okay, मैं start करने के पहले I'll just try to understand something from you all. Am I audible? Yeah? Okay, wonderful. Is it better? अच्छा, ठीक है। Okay. So start करने के पहले, I know a lot of people had questions on NFT, metaverse, and all that. See, NFT scams, theft, manipulation. Before seeing that, we have to understand पहले एक चीज क्या है? The victims who are going to come are those people who are going to be buying these NFTs. So in many cases, ये क्या होगा? उसका NFT को कुछ चोरी हुआ होगा. He might come to you saying that I have lost my NFTs. Right? So the first thing is, we have to first appreciate that it is an asset. हम कभी क्या लग रहे हैं, ये क्या है NFT, कुछ डिजिटल का फोटो है, तो he lost it, ये क्या है इसमें, राइट? मेरा टाइम क्यों वेस्ट करने का है इसमें, राइट? तूने कुछ खेला था डिजिटल पे जाके, कुछ गेम खेला था और तो लॉस हो गए, तो छोड़ दो, मैं क्या करने वाले हम, क्यों मेरा टाइम वेस्ट करके? फिजिकल टाइम है मेरा, तेरा वो डिजिटल एसेट है, मैं फिजिकल टाइम वेस्ट करके क्यों तेरा डिजिटल एसेट ढूंढने के लिए जाता हूँ? The first thing is, we have to appreciate that it is an asset. How do we appreciate it as an asset, right? We can't force ourselves saying that we'll sit today and meditate and say that, okay, this is an asset we'll appreciate. We'll not appreciate. Does digital world have a value? How many of your people have kids here? Everyone, almost everyone.
at least more than 4 years old, even less than 4 years old, even I will say. किसी को इधर माइनक्राफ्ट क्या है पता है? सुना है? रोब्लॉक्स क्या है पता है? कोई भी तो नहीं सुना है, go check with your kid. They all will know 100%. Right? They're all games, so nothing wrong. कुछ गलत चीज नहीं है, वो सिर्फ games है. But the way this game is modeled is very, very important. Right? During our times, games कैसे होता है? For example, Mario होता है, नहीं तो Tetris होता है. Right? उसमें सब चीज defined होता है. वो गेम पे सब चीज डिफाइंड है. लाइक मैरियो विल जंप ओनली लाइक दिस क्रॉस लेवल 1. सेम सीन्स आते हैं, कुछ अलग सीन नहीं आने वाले उसमें. These games are much different. Here they can create the world, build the world. They can create a new scene even. Okay? The game that we played as entertainment during our childhood, वो अलग था. अभी experience what people are getting, kids are getting, वो अलग है. Right? When these kids grow up, for them, what is very important is not gold, it's something else. Right? Only if we understand this generation's need and necessity, हम ये appreciate कर सकते हैं, ये asset है, ये तो नहीं. Right? This is a very, very big difference. Now I'll give you one asset that you will be able to appreciate, वो digital है. ऐसा समझ लीजिए मैं BCCI हूँ, right? Dhoni, the six that he hits in the World Cup final, and India wins the World Cup. उसका हाई डेफिनेशन वीडियो मैं एक NFT बना के भेज रहा हूं. डू यू थिंक इट हैज अ वैल्यू और नॉट? Suddenly it has got value. Why? Because you appreciate the Dhoni six. Right? Let's consider someone, वो उसको ये माइक जैसे इसका कहूँ मैं. Let's consider someone, उसको क्रिकेट उसको आता ही नहीं है, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, उसको उसका वैल्यू समझ नहीं आता है ना. Let's consider वो एक LEA है, वो एक पुलिस ऑफिशियल है. Now if you go to him and say that ये NFT था मेरे पास, वो किसी ने चोरी कर दिया, what will he say? मेरे को सिर्फ फुटबॉल पता है बॉस, मेसी का है तो बोल दो, धोनी का है तो मैं कुछ नहीं करने वाला. That is the difference. For him it is valuable. For the generation that we are in, वो valuable नहीं है, but still he is a victim. Right? So we have to consider that these values, these assets have a value क्योंकि इसका डिमांड है. कोई भी एक और बंदा है, वो उस एसेट को खरीदने के लिए रेडी है. That is why it has got a value. If I have an NFT and no one wants an NFT, what is the value of the NFT? Zero. I can keep shouting that the value is 1 million, but खरीदने के लिए कोई भी नहीं है तो वो zero है उसका value. But if there is someone who is willing to buy that NFT, what becomes the value of that NFT? It is the demand that will define वो NFT का value है तो नहीं. Now I got some basics which I will not go through. Right? I will directly go to this. How does this monkey look? Okay, let's do an auction here. I am selling each of these monkey photos separately. ठीक है ना? How much is anyone willing to pay for this one monkey photo? कोई भी, any bids? कोई भी खरीदने के लिए ready है? कितने? First one, how much? 100 rupees. Okay. Any more auctions? 100 rupees once, 100 rupees twice, 100 rupees, 200. 200 rupees हो गए अभी. 500 भी हो गए. Right? 500 once, 500 twice, 1000 हो गए अभी. अच्छा, बढ़िया. 1000 rupees once, 1000 rupees twice, 1000 rupees thrice. So sorry, but I cannot tell you this, sir. क्योंकि ये बोर्ड एप का वैल्यू है, minimum is $500,000, almost 3.5 to 4 crore rupees. Q. What do you think is the use case? See, I'm doing this slide. Maybe I'll take a minute or two in this slide only to say that we have to appreciate the other end. Right? Why do you think इसका value इतना ज़्यादा है? Why will they buy?
क्यों? See, because there are 10,000 like this monkeys. 10,000 monkey photo, different. एक monkey, एक sailor का monkey है, वो तो बीच में पता नहीं क्या है, zombie monkey, ऐसा कुछ है, ठीक है? But 10,000 ऐसा अलग-अलग monkey का कुछ attires है, but every photo the monkey will look bored like this, not even happy smiling, ठीक है? But each of these bored ape monkeys is very very expensive. What is the use case? क्यों लोग क्यों bid कर रहे हैं? मेरे को पता नहीं सार क्यों bid किया 1,000 rupees. But why are someone buying almost 4 crores into a lot of board apes is more than 1.2 or $2 million. So why is someone buying it? Who is that someone? कौन है ये लोग? ये खरीद रहे, ये कौन है ये लोग? We'll come to that, ma'am. We'll come to that, sure. So, yes, sir. That is because I didn't say I'll take the money really, no, sir. If I said I'm going to really take money, sir, I'm going to take the money really, sir. Are you still okay to buy? Yeah, but still someone is paying. And this board ape, so प्रशांत ने बोला था कुछ use case है, games में use कर रहे हैं. I can't use it in any game yet. Okay, yet पता नहीं हो future पे, no, they have a lot of plans anyway. I cannot use it in a game yet. उसके बाद भी क्यों लोग इतना पैसा देके खरीद रहे? Okay, so let's understand this. It is a status symbol. ये status symbol है. ये board ape का image मेरा Twitter का DP पे डाल दिया था. Twitter has got one good feature. See what is the best way to hack an NFT? Can someone say? The best way to hack an NFT is go to the NFT image, right click, save as image, hack over. You also have a copy. Unlike the physical world, in digital world, you will not be able to say that this copy, this digital copy and this digital copy, if I have two copies, which one is original, which one is duplicate, you will not be able to say. Both are original. So that is the best way to hack an NFT. Someone has done this, right click save. फिर तो गया मेरा 3 crore 4 crore. मैंने क्या इन्वेस्ट किया, सब कुछ गया था ना. But we can verify if this image, ownership of this image on the blockchain. I will go and check. It will say this image, the real owner is this particular address. Yeah. If I right click and save and upload this image in another address, even that address will show this image, but it will not be from this particular issuer. There is someone called a issuer here. Indian rupees का issuer कौन है? RBI governor. Right? If there is someone else's name written there, you will say that this is not Indian rupees. Just like that, in this contract, when you go see the contract, it will say issuer का वो contract address होगा. You can say issued by Board H Yacht Club. Yeah, BAYC का issuer का detail, it will be there. And in my Twitter DP, मेरा NFT डाल सकता हूँ in my Twitter DP, which anyone can go and verify if it is the original वाला image है तो नहीं. Now, all the rich people, be it pop stars, be it Justin Bieber, Miley Cyrus, all these pop stars, they want to show that they're so rich that they can go buy this. It is a need. Status is a need in this use case. Right? Now, we will not be able to appreciate this need. हमको क्या लगता है इतना पैसा वाला है, he's burning his money off. Right? That's what we will think, but this is a need. Right? In our level, in our capacity, we also spend money. In their level, their capacity, they are spending money. बस उतना ही difference है. Now, the value of an NFT is dependent on demand. ठीक है ना? कोई भी इसको आके बोल ही नहीं सकते. It should be only this much rupees. It should be only 10 rupees. कोई भी बोल नहीं सकते. It is based on demand. Just like how an art piece is. An art piece, what is the value of an art piece? कोई भी बोल नहीं सकते unless and until there is a bid like this happens and a price is defined. This is called price discovery. An art piece real price, when it is known, is when it comes to an auction house.
till that time बहुत सारी speculations होगा ये for example, you know, Michelangelo का है, you know, it might be this much value, you can say anything. When it actually comes to the auction house, it might be 10 times or, you know, half of the demand. Okay? So it is all based on demand and what someone is willing to pay. That is how an NFT gets an value. Now, there are a lot of use cases of NFTs, what Prashant also covered. I will just say one or two use cases which is commonly used for, and you might even come across this. ये use case पे कोई भी आपका घर पे भी होगा. Like your kid even will be having one of these use cases, you know, that he is using. मैंने example बोला था Roblox. ये Roblox के अंदर I think most of your kids will definitely know about Roblox. आप जाके पूछ लीजिए उसी से. In Roblox, when you play, you will get some coins called Robux. Okay, ROBUX. Okay. It's my son's birthday tomorrow. It's a real thing. Okay, it's my son's birthday tomorrow. I asked him, what do you want for this birthday? He said to me, buy me Robux. I'm not buying him because I'm still in this mindset that no, I'm not going to spend money on something which I cannot feel yet, right? Though I am running a crypto exchange, right? But what is that Robux then? वो एक virtual currency है that I can use within that world of Roblox. उसका use case है. If I go to my son and ask, you want Robux or gold chain, he'll say Robux. It is about what the need of that person is that will define what the product's demand is. Now, in such a world, that is called a metaverse, right? I create a world where you go inside and you lead your life. Life in the sense, not life. You can also lead your life. ऐसे भी metaverse है. आप सुबह उधर ही, you know, you can wake up. आप उधर ही, you know, you can take bath, you can brush, you can live your whole life. मैं एक VR का set डाल देता तो इतना realistically होगा, सिर्फ सरदर्द होगा because VR is still not that great. You can live your full life with all stranger animated versions. ठीक है? Now, in that metaverse, there are certain things I want. I want a cool jacket. Okay? That cool jacket, I found it like one of my other friend or another guy in the profile is wearing that cool jacket. I'm going and asking him, भाई मेरे को jacket चाहिए. He will say मैं वो trade कर देता हूँ. मेरे को आप 10 Robux दे दीजिए. वो 10 Robux कैसे आएगा? पापा से ही आएगा. सही है ना? So now that jacket, that shoes, they all are NFTs. If it is a unique piece, आप ऐसे समझ लीजिए, if that jacket can be made it as million copies, will I be willing to pay the $10 or 10 Robux for that? Availability बहुत ज़्यादा है, इस पे डिमांड ही नहीं है. मैं भी जाके कोई से भी, you know, फ्री में ही लेकर आ सकता हूँ. Limited, I can create that. एक ही जैकेट है. You know, like this, there is another jacket, there's no other jacket है, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा. So NFT is that. So like what was said earlier, no, when we were kids, हमने WWE का कार्ड रखा था. Like that, there are different versions of NFT. मैं सिर्फ एक example बोल रहा हूँ. Like FIFA will be releasing the player cards. हमने एक कार्ड हमारे पास था during our childhood, cricket का cards था, trump cards था. Like that, there will be cards. Cricket trump cards are also there as NFTs, right? I can play a cricket game virtually. Like on computer, I can play a cricket game. Like trump card हम खेलते हैं ना. Strike rate इतना है, आप भी डाल दो strike rate इतना है. I can play it online. And to have that, I need a card. वो card खरीदना पड़ेगा, NFT जैसा खरीदना पड़ेगा. So NFT का technology क्या होता है? Unique होता है, verify कर सकते हैं. वो technology के ऊपर आप कोई भी use case बना सकते हैं. Right? I can even create a use case that police certifications. अभी आप एक training पे आया इधर. For example, if I'm giving a certification, I can put this certificate for each and every person as an NFT in a blockchain. Ethereum blockchain पे मैं डाल सकता हूँ. By any natural calamity, you cannot lose it even. Certificate है. उसका copy कोई भी click करके देख सकते. XYZ has attended this training.
यूज केस इज समथिंग वी डिफाइन. कोई भी यूज केस, ये इंटरनेट जैसा है. इंटरनेट पे गैम्बलिंग भी कर सकते, इंटरनेट पे ओला का ऐप भी चला सकते. तो यूज केस, देयर आर मल्टीपल यूज केस वी कैन डिफाइन. कोर कॉन्सेप्ट क्या है? यूनिक आइटम्स बना सकते हैं और यूनिक आइटम्स को वेरीफाई कर सकते हैं बस. ओके, नाउ विद दिस we'll get into what all scams happen. Okay, now when I'm getting into each and every scam, yeah, I just want you to say one thing to me. मैं एक स्कैम के बारे में बोलता हूं आपको. आप मेरे को वापस ये बोल दीजिए, इन द जनरल वर्ल्ड, एक क्रिप्टो और एनएफटी का छोड़ के, हैव यू आल्सो सीन द स्कैम इन द जनरल वर्ल्ड? ठीक है ना? लेट्स सी इफ द स्कैम इज वेरी वेरी स्पेसिफिक टू क्रिप्टो. नहीं तो जनरली भी होता है, क्रिप्टो में भी ये हो रहा है. ऐसा है, नहीं तो इफ इट्स अ वेरी स्पेसिफिक थिंग और नॉट. ओके, phishing scams. Anyone knows what a phishing scam is? What is a phishing scam, ma'am? अच्छा, but phishing scam, sir. नहीं, वो yeah, ma'am, yeah, I think she's on her heels. Yeah. But actually it came from some other source. Correct. So recently even my website is geotus.com. Okay, there were 10 websites that were created. geotusbcx.com, geotusacx.com, and all these websites, they were putting Google ads so that someone searches geotus, ये ऊपर आ जाएगा. ठीक है? And general customer क्या करते हैं? वो generally people what they do, वो Google पे जाके search मारते हैं. कोई भी साइट को जाने के लिए पहला दिखता है उस पर क्लिक कर देते हैं, उसको अंदर जाते हैं. So these scammers are also very good, हाँ? वो इतना ओरिजिनल दिखते हैं, right? That they will go and do their normal operation. उधर यूजर नेम पासवर्ड डालेगा कस्टमर, वो स्कैमर वही यूजर नेम पासवर्ड आके इधर नॉर्मल साइट पे भी डालेगा. उधर ओटीपी आएगा, इधर भी वो ओटीपी डालेगा. सो पैरेलल मैच टू मैच करके इधर से फंड उठा के जाएगा, राइट? बट वी हैव बिकम सोफिस्टिकेटेड इनफ to avoid certain phishing scams, but these guys are also very sophisticated. So these are phishing scams. They also happen in crypto. Now, how do they happen in crypto? Like I said, मेरा website पे this week it had happened. I wrote to the cybercrime and I got this website. और domain वालों को भी लिख के वो website सारे मैंने down किया था. But during the time क्या होता है? Let's consider एक NFT platform है, OpenSea है. राइट? OpenSea क्या होते हैं? एक मार्केट प्लेस है, ऐसा समझ लीजिए वो OLX है. राइट? OLX पे क्या होता है? एक बायर होते हैं, एक सेलर होते हैं, वो प्लेटफॉर्म मैच करते हैं और आप खरीद सकते हैं. NFT OLX जैसा ही है, नहीं तो Amazon जैसा ही है. Amazon पे आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, OpenSea से आप NFTs खरीद सकते हैं. नाउ कंसिडर दैट आई एम अ सेलर इन NFT. मैं सेल कर रहा हूँ, मेरा पूरा NFTs लिस्ट करके रखा हूँ. आई गेट अ मेल saying that hey, we are changing our smart contract address. अब क्या कर लीजिए, इसी लिंक को जाके ट्रांसफर ऑल योर NFTs to this address, right? It will look like a genuine email that has come from OpenSea. What I will think that अच्छा मेरा NFTs उधर पड़ा हुआ है, कुछ तो होने वाला है, so quickly I'll go and do the action. उसके बाद ही मेरे को realize होगा that I have transferred to an address of a scammer. Now whatever I said, there is a real-time use case that had happened in OpenSea itself, one of the largest marketplace guys, right? So how all phishing scams can happen? Website phishing scams, email phishing scams, and the worst nightmare for a company is when their social media handle gets compromised. That is what I'm putting here. ये क्या होता है? समझ लीजिए, I don't want this to happen, but I'm taking me as an example. Geotus का ट्विटर का हैंडल समझ लीजिए कॉम्प्रोमाइज हो गए. सो स्कैमर जाके पहले क्या करता है? I am giving away 1 Ethereum to 100 people. Who all wanted? Send me 100 rupees. Not 100 rupees. He will say, send me 10,000 rupees. I'll give you one
one Ethereum. So at least 100 people will not say I have a million customers. 100 people say he will easily take 10,000 rupees. 10 lakh ho gaya iska. Right? The scam is done. Now like this, बहुत सारी NFT players, उसका Twitter का handle, नहीं तो Discord आपको पता है Discord क्या होता है? Okay. Most of the NFT things happen in Discord. वही है. Exactly. Your son is a gamer then, sir. बहुत सारी गेम खेलते हैं क्या? हाँ, exactly. Exactly. So it is very important to understand Discord. अभी एक्सप्लेन कर लेता हूँ. आपको टेलीग्राम पता है? व्हाट्सएप पता है? डिस्कॉर्ड एक और चीज है बस. बट उसपे क्या है अलग, वो क्या डिफरेंस है? वो डिस्कॉर्ड कैसे बनाया था? ये गेम करते हैं ना लोग. फॉर देम टू डिस्कस विथ ईच अदर, डिस्कॉर्ड वाज द मीडियम. So it became a medium of discussion for gamers, and slowly anything related to gaming went into Discord. NFT is one of the biggest use case. क्या होता है गेमिंग के अंदर एक बहुत बड़ा यूज केस है. लाइक मैंने बोला था ना, वो जैकेट है, नहीं तो एक एरो है, बो है, तो बहुत सारी चीज NFT बना सकते हैं. सो मोस्ट ऑफ द NFT कम्युनिटीज टेलीग्राम पे होते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम डेफिनेटली डिस्कॉर्ड पे होते हैं. उसका डिस्कॉर्ड का चैनल जस्ट लाइक योर टेलीग्राम चैनल, वो कॉम्प्रोमाइज हो गए तो द स्कैमर्स विल डू द सेम थिंग. दे विल गो पुट अ पोस्ट सेइंग दैट आप इधर ट्रांसफर कर लो, नहीं तो एक एयर ड्रॉप देने वाला हूं मैं. आई विल गेट इनटू ईच ऑफ द स्कैम डिटेल्स. नाउ व्हाट आई हैव आल्सो डन इज आई हैव एक्सप्लेन्ड स्कैम क्या है एंड इन रियल टाइम यूज केस क्या हुआ है इसमें. राइट, दिस इज अ रियल टाइम यूज केस वेयर इन 2022 एक बहुत बड़ा फेमस सॉन्ग राइटर है, his NFT was stolen. Right? Bored ape का वो monkey है ना, he was holding that monkey वाला bored ape. That was stolen because of a scam. Again, like a phishing scam. Right? It was basically, I think, okay. So basically वही था, एक link था, उन्होंने बोला था transfer this from this contract to this contract. उन्होंने उसको लगा था ये original OpenSea है, and he did it and he lost his funds. Right? Now, most of the cases what I'm going to talk about here, you may not have seen yet. Kyunki, also consider this, even if someone has received a complaint, I don't think they would have taken it forward when it is an NFT. Because you have to understand things first. If you don't understand, how can you register a case? So don't consider that NFT का case India पे नहीं है, मैंने देखा ही नहीं है. Because of limited knowledge, I don't think anyone would have taken a case on NFT. Because we see in our general crypto community पे lot of discussions happen. कोई भी आके बोलता है मेरे के बारे में ऐसा scam हो गया था NFT पे. Right? These people don't come out yet and register a case with you क्योंकि उसको पता है that police will not appreciate them. Okay? But ये हो रहा है, you will get something if there is more knowledge in the ecosystem. Okay. What is airdrops? Anyone has heard this word called airdrop? Okay. No, that's anyone else? Okay. Okay. Yeah. So, airdrop is not to do anything with scams. Sir. Airdrop is a general thing in the crypto world. क्या होता है समझ लीजिए मैं एक नया प्रोजेक्ट हूँ, राइट? नहीं तो ऐसा समझ लीजिए आई एम अ न्यू कंपनी. मैं ओला जैसा एक कंपनी लॉन्च कर रहा हूँ, राइट? राइड शेयरिंग ऐप का लॉन्च कर रहा हूँ. तो अट्रैक्ट कस्टमर्स मैं क्या कर रहा हूँ? इफ यू आर अ ओला कस्टमर, आई विल गिव यू 100 रुपीज वर्थ ऑफ फ्री राइड. ये क्या है? मैं एक फ्री राइड आपको दे रहा हूँ.
इन क्रिप्टो वर्ल्ड क्या होगा, मैं एक नए क्रिप्टो लॉन्च कर रहा हूँ, नहीं तो मैं एक नए NFT का सिलेक्शन लॉन्च कर रहा हूँ. Anyone who's having this collection or anyone who's having more than 10 Ethereum in any address, I am giving something free, like एक टोकन फ्री दे रहा हूँ मैं. ये फ्री का चीज है ना, इसको बोलते हैं एयर बस. कुछ नहीं है, फ्री का चीज को एयर ड्रॉप बोलता हूँ. नाउ आई एम सेइंग इन, मैं एक डिस्कॉर्ड ग्रुप पे जाके टेलीग्राम जैसा रख दीजिए, एक लिंक डाल रहा हूँ, आई एम गिविंग फ्री एयर ड्रॉप, कम रजिस्टर हियर, कनेक्ट योर वॉलेट बोल के. नाउ प्रशांत ने शोड यू अराउंड मेटामास्क यूज करके ओपन सी पे कैसे कनेक्ट हो रहा है वॉलेट. क्या होता है, when you want to buy something or claim something, you first have to prove that you own that address. मैं एक airdrop announce कर दिया, anyone who's owning more than 10 Ethereum in any particular address, you will go get an airdrop. You have to come first register with me. ठीक है, उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, वो एड्रेस उसका है तो नहीं प्रूव करना पड़ता है. Okay, to prove that, he will go connect his address to that particular link I have sent. प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, साइन करना पड़ता है. I will send a message, you have to sign. This signing has got a very big significance. You सबको ये DSC पेन ड्राइव पता है ना, साइन करने के लिए यूज होता है, डिजिटल सिग्नेचर का पेन ड्राइव. साइनिंग का कॉन्सेप्ट सेम है, क्रिप्टो का साइनिंग और प्राइवेट की साइनिंग सेम कॉन्सेप्ट है, वो दोनों अलग कॉन्सेप्ट नहीं है. नाउ यूजुअली जेन्युइन वेबसाइट्स क्या करते हैं, एक मैसेज भेजते हैं सेइंग दैट हेलो आई एम फ्रॉम दिस वेबसाइट, जस्ट साइन दिस मैसेज एंड सेंड इट बैक टू मी. वो साइन करके सेंड कर दिया तो क्या प्रूव हो रहा है, वो एड्रेस का ओनर वही है, यही प्रूव हो रहा है. ये मैलिशियस वेबसाइट्स, ये स्कैम वेबसाइट्स क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग जनरल वेबसाइट जनरल मैसेज, दे विल सेंड अ मैलिशियस कोड दैट विल से दैट गिव परमिशन टू विथड्रॉ फंड्स फ्रॉम योर एड्रेस. जनरली यूजर्स क्या करते हैं, नेक्स्ट 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 क्लिक करके अप्रूव करते हैं. एग्जैक्टली सेम चीज इधर होता है, and they will give approval to that. They went to that website to claim a free airdrop, but in the reverse क्या हो जाता है, whatever fund he had, which is more than 10 Ethereum, वो गायब हो जाता है. Right? So this is an airdrop type scam. But what is common in all these things? Phishing. Now, is phishing so specific to crypto world? No. What is specific here? The asset that got stolen is different. Bas. The modus operandi is everything, it is same. Actions done is same. What is different? Asset that got stolen was not rupees here, it was crypto here. Do we agree on that? नहीं तो इसमें कुछ difference लग रहा है आपको? Yeah? Okay. Now this is another peculiar Trojan horse. Trojan के बारे, okay, now Trojans, is it, have you heard this word in normal world? Yeah, what does a Trojan virus do? Yeah. Yeah, so why is it called a, okay, no, let's not go to story. I'll directly say it. Troy movie Trojan. Why? Because it's hiding inside. And so Trojan क्या करते हैं, Trojan virus, it will execute in the back. आपको पता ही नहीं चलेगा कुछ execute हो रहा है, आपका data भेज रहे हैं बाहर, आपको कुछ नहीं पता चलेगा, but everything is getting stolen from the back. इसको बोलते हैं Trojan. Now few smart contracts, few NFTs are like that. आप उसको जाके interact किया तो, if you give that permission to interact, sign कर रहे हैं ना, interact किया तो, it will execute a Trojan. तो Trojan कैसे execute होगा? Suddenly a pop-up will come because in the smart contract itself, you cannot have a virus. It will put a pop-up outside. आप वो pop-up को जाके कुछ action किया तो वो Trojan का काम शुरू हो जाएगा. Right? The customer or the victim will not even know how we got attacked. Because उन्होंने एक smart contract को जाके touch किया था, वो कोड पे कुछ गलती नहीं है, but still he got screwed. Right? So these are called Trojan attacks, which no one will be, even the best guy, he might fall for such an attack. Okay.
Okay. This is okay. Impersonation scam. ये क्या है मैं बोल देता हूँ. You guys say that it generally happens or not. I go to a Telegram group and I say I am the owner of Geotas cryptocurrency exchange, and I am saying that मैं एक free airdrop दे रहा हूँ. But आप ओरिजिनल है नहीं है वो कंफर्म करने के लिए यू ट्रांसफर सम मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट. वो ट्रांसफर कर दिया तो मेरे को पता चलेगा ये बैंक अकाउंट का ओनर आप ही है, तो उस बैंक अकाउंट को वापस में आप 10,000 दे दीजिए, मैं 1 लाख दे देता हूँ वापस. राइट. टेलीग्राम पे जाके मैं ऐसा कम्युनिकेट कर सकता हूँ, क्योंकि टेलीग्राम का इश्यू क्या है, यू कैन क्रिएट प्रोफाइल विथ एनीवन्स नेम. राइट. टेलीग्राम पे सिर्फ वो टेलीग्राम आईडी यूनिक होता है. The Telegram ID, even it is most of the people check नहीं करते, क्योंकि मेरा Telegram ID है विक्रम सुब्राज. ये स्कैमर्स क्या करते हैं, VVIKRAM बोल के इंस्टेड ऑफ विक्रम VV बोल डाल के एक नया ID क्रिएट कर देते हैं. फॉर जनरल आइज, naked eyes will not be able to catch this. A customer क्या will get scam. This is called an identification scam. Does it happen in real life in general scenarios? It happens in the same Telegram even. In Telegram, a lot of UPI related scams happen. Your job fraud scam happens even as an impersonation scam. Okay. Now, it will get a bit technical here, but I'll try to make it easy. मैंने वो board app दिखाया था, monkey वाला दिखाया था. Now I am saying, instead of exchanging money, मैं एक NFT देता हूँ. Equivalent to that, आप भी एक NFT दे दीजिए. Like trump card exchange होते हैं ना, cricket trump cards. Like that we'll do. So first important thing इसमें क्या है, that the NFT that I have should be genuine. Now वो original EA Sports नहीं तो BCCI issued trump card होने का है ना. If I just take a photocopy of it and then come exchange it to you, आपका तो loss हो गए ना. So the NFT should be original. बोर्ड एज क्लब में ओरिजिनलिटी कैसे चेक करते, एक आप कॉन्ट्रैक्ट जाके वो सब चीज चेक कर सकते, नहीं तो इन द इमेज देयर इज अ लाइक अ सिंबल, ओरिजिनल बोल के एक सिंबल है. देयर वाज दिस मार्केट प्लेस, ओपन जी जैसा एक मार्केट प्लेस था, वेयर कस्टमर्स कैन एक्सचेंज NFT to NFT. That marketplace, what it does is, it will take up the work of verifying if it is genuine or not. क्योंकि मेरा मार्केट प्लेस है, Amazon है, मैं Amazon जैसा समझ लीजिए, उस पे कुछ फेक प्रोडक्ट सेल हो रहे, तो Amazon पे वो इश्यू हुआ था ना, फोन का अंदर स्टोन डाल के आ रहे बोल के. So Amazon's reputation will get spoiled. Just like that, this marketplace took up the ownership of verifying if the NFT is original or not. But they were so stupid, they were only seeing the image and saying that इसमें वो logo है, तो ये original है बोल के. They didn't go check the contract. हाँ. So what happened? The scammer was noticing this. ये लोग सही check नहीं कर रहे बोल के. So the scammer, what he did, 3 board ape का वो image लेके वो सिर्फ वो चिपका के वो symbol चिपका के उन्होंने बेच दिया for something that is more valuable. So that came up as an issue, and the police actually solved this case. They were able to get back this BAYC. I will say one very good thing about NFT compared to a general crypto. Solving a general crypto case is tough. Solving an NFT case is much more easier. Can anyone say why? उस पे भी आईडी मिल जाता है, आईपी तो मुश्किल है सर, किधर भी आईपी नहीं मिलने वाले आपको, किधर भी आईपी नहीं मिलने वाले सर आपको. Okay. Anyone has heard about mixer services? Okay, I'll be covering it up at the end even, but I'll give a basic overview. So, fungibility or non-fungibility, we had seen the difference before, right? Is Bitcoin fungible or non-fungible? Fungible. Okay. Is Indian rupee note fungible or non-fungible? Indian rupee note is non-fungible. So, if
I know where you're confused, ma'am, because the number, serial number hota hai. So these two should be different. Is where the thinking is, right? Think the fungibility concept from the point of view that आपके पास एक 100 rupees note है, मेरे पास एक 100 rupees note है, दोनों का अलग serial number है. But if we both exchange it, has anyone faced the loss? Okay, so we can easily interchange without any loss. This is fungibility. But आप ऐसा समझ लीजिए, मेरा 100 rupees note पे, which we should not do, मैंने जाके धोनी का signature ले लिया. Now, if we exchange, am I in a loss? Suddenly, I made a fungible rupee note non-fungible. यही होता है difference. अभी ऐसा समझ लीजिए, Bitcoin में भी यही है. Bitcoin, if I give you 1 Bitcoin and you give me 1 Bitcoin, we both are in a no-loss situation. Okay? Now, let us consider, मैंने जाके scam करके, मेरे को एक blackmail करके, किसी को blackmail करके, मैंने एक Bitcoin ले लिया. मेरे पास एक Bitcoin है. Right? Now, to avoid being caught by the law officials, मैं क्या करता हूँ? Okay, Bitcoin एक address के अंदर होगा. Every transaction is publicly available to anyone to see in a Bitcoin blockchain. What is not publicly available to see? Sorry? Private key तो ठीक है. It is not available. Identity. Okay, transaction is public. Identity is not. Okay. So हम जाके क्या देख सकते हैं? एक Bitcoin वो blackmailed 1 Bitcoin has come to this address. इसी address से it has gone to this address. Hop, hop, hop. And उसके बाद he has come to an exchange. Now I'm trying to go 20 slides ahead and I'm trying to explain you something. He has touched this exchange, and as a police official we got to know that he has touched an exchange. What is the main thing we can get if he touched an exchange? Identity. This is how we solve a crypto case. You cannot solve a crypto case till the time he has not touched an exchange. Unless until you have caught the person already and उन्होंने बोल दिया हाँ मेरे पास ये coins है. Till that time, if he has not touched an exchange, you will not be able to catch him. Okay? Now, when he touches the exchange, I am going to get the details and I am going to catch this guy. But I am a criminal. I will not make it so easy for you. What I will do is I will use something in between called a mixer service. What will this mixer service do? Consider it like a ball. Now inside this ball, like me, 10 more people will send 1 Bitcoin, 2 Bitcoin, 3 Bitcoin like this. I will shake this ball badly. So 1 Bitcoin will go there, here, here, there, there. It will be so tough. And then I'll say send 1 Bitcoin out of this ball to the address that this guy wants to. I will send it out. But when आप investigate कर रहे हैं ना, उसी टाइम क्या होगा? आप ये mixer service को touch किया तो आपको इतना घुमाएगा. You will be lost here. इसको बोलते हैं mixer service. So he will use a mixer service and transfer it to an exchange. That is when the life becomes very, very, very tough for an investigating officer. Right? There are some tools which can help you out, but even those tools will make it very, I mean, it's still a very tough job if they have touched the mixer service. Now, why I said this, I wanted to say, why NFT पे कोई भी scam किया तो easy है compared to a normal Bitcoin. Let's consider he is doing with NFT. आप तो कुछ भी mix करो. NFT unique है. Right? Whatever goes in should come out here as an NFT. Same NFT है. So you cannot really do a runaway with an NFT scam. Right? They definitely have to convert that NFT to another crypto, general crypto. Withholding only as an NFT, they cannot run away. Right? So that is why क्या करते हैं scammers? First thing that they want to do is offload it to another crypto or cash.
To do that, they'll have to mostly touch a marketplace or an exchange, right? Once they do that, we can start tracking. We have to go start tracking the virtual currency. अभी digital crypto, Ethereum नहीं तो Bitcoin उन्हें खरीदा ना, वो किधर जा रहे जाके we have to go and check. Okay, now I'll just for the interest of time, I'm not to go much into detail of all these things. I'll directly jump into how you have to solve these cases. Okay, so definitely there are so many type of scams. All these scams, I will even give you this PPT. उसमें ऐसा नहीं है कुछ अलग क्रिप्टो पे कुछ बहुत दिमाग डाल के कुछ तो किया है. These are all scams which you already seen in your life. 10 years of if you had used internet at least for the last 5 to 6 years, you know all these scams. कुछ नया नहीं है क्रिप्टो इकोसिस्टम पे. The scam is new. Investigation is new, but scam is not new. Rug pull is the general scam you will see on a day-to-day basis. क्या होता है जनरल रग पुल? क्या होता है? इन्वेस्टमेंट आपने बोला था ना मैम, वो रग पुल है, राइट? दे विल शोकेस दैट दैट्स अ बिग कंपनी, यू गिव मी मनी, आई विल डू सो एंड सो थिंग्स, और आपको रिटर्न वापस दे देता हूं. सारी एमएलएम स्कीम्स रग पुल है. जस्ट लाइक दैट दीस रग पुल्स हैपन. इस पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल एनएफटी पे क्या होता है, दे विल से दैट आई एम गिविंग यू एन एनएफटी टोकन. व्हाई शुड यू बाय दैट एनएफटी टोकन? Whatever money you are going to give it to me, I am going to give it to Ukraine war fund. Really it happened, okay? Ukraine war fund के लिए मैं दे रहा हूँ, उसके लिए एक NFT launch कर रहा हूँ. So lot of sympathizers of Ukraine क्या करेगा? उसको fund देगा. This guy did not give to Ukraine nor Russia. वो खुद ही उठा लिया उसको. So like this, a lot of rug pulls happen. This is a straightforward rug pull. थोड़ा sophisticated rug pull इस पे क्या होता है? I am a NFT guy. मैंने NFT launch कर रहा हूँ. But why would someone buy my NFT? उस पे कुछ फायदा होने का है ना. Why would it the price increase? So to give a promise, मैं क्या बोल रहा हूँ? I will be launching a game soon. उस गेम पे there are a lot of characters. For example, मैं एक गेम शुरू कर रहा हूँ, उसका मिक्की, मिनी, गूफी, सारी कार्टून कैरेक्टर्स उस पे है, राइट? एंड आई एम सेइंग मैं उसका NFT पहले आपको दे देता हूँ, आप ये NFT खरीद लीजिए. People who play that game will need these characters to play that game. आपसे खरीद लेगा वो, right? So what you will think, हाँ ये तो सही आइडिया लग रहा है, I'll go buy this NFT. वो लोग क्या करेगा? वो NFT बेच के he will get Ethereum and other cryptos. That's it, he'll run away, right? This is a very common rug pull that is happening in this ecosystem. Okay. Now let's get on to this, right? Obfuscation of funds is what we discussed as mixers. Mixers क्या होता है? Funds obfuscation. Obfuscation in the sense hiding. I'm magically hiding the funds. One of the most famous mixer is called Tornado Cash. Why it became very famous is, one, there are a lot of people who used it to mix funds. Second, US government ने इसको sanction कर दिया. Can you sanction a blockchain? The answer is actually yes and no. A lot of people, like in my ecosystem, who we thought that a crypto or a blockchain product cannot be sanctioned at all, he also got a bit of a shock. Okay? That there is partly a way where governments can act bolke, right? But not anymore. The system got even more stronger. Basically, there's things called validators and stuff. If they're all based out of US, you can control them and you can say don't do it. ऐसे भी एक चीज है, if you see, lot of these crypto products are running on AWS. Amazon Web Services पे ही run हो रहा है. All these chains and everything is mostly all the the validators are running on AWS. Tomorrow, if US wants to stop a chain, what they can do? They can ask AWS to stop support to all these validators. But you don't have to think about all this. A long shot say it will not happen. It needs a lot of efforts to do all that. Now,
But short thing, obfuscation of funds, tornado cash is one of the most famous things. There is not just one, बहुत सारी mixer services है और वो भी decentralized है, वो एक entity नहीं है, एक बंदा नहीं बैठ के हवाला कर रहा है, no, एक organization है, organization भी नहीं है, वो भी एक software product है, वो software product का काम क्या होता है? It's an algorithm that you can sit and read. आप जाके वो पढ़ेगा तो algorithm आप भी you can sit and read it line by line. But the main thing in the algorithm is randomness of mixing and throwing things out. Right? It's a software which will do random mixing. ऐसा समझ लीजिए. This is how people do it. एक और चीज क्या होता है? There are a lot of non-KYC enabled exchanges. Like for example, अब कोई भी जियोटस मेरा एक्सचेंज है, मैं जियोटस एक्सचेंज रन कर रहा हूं, कोई भी कस्टमर जियोटस पे आके बाई नहीं तो सेल करने का है तो he has to undergo a complete KYC process, right? उस पे enhanced due diligence वगैरह है if he wants to sell more. So it's a stringent process that they will follow, equal to or more than banks whatever it is happening. But बहुत सारी exchanges भी ऐसा है where it is more like, for example, the most famous exchange, can someone state worldwide? किसी को भी कुछ crypto exchanges के बारे में पता है? Binance. Do you know Binance was not KYC? That is a big problem that they faced. WazirX तो KYC था पहले से sir, but Binance recently US they had a very big $4 billion का fine डाला था, $4 billion, right? Because वो initial time पे for almost 2 years they ran it without very less or no KYC. So what happened? Lot of people who were using it for terrorist financing, who were using it for money laundering, they were routing funds through Binance. But after 2 years, उन्होंने KYC norms वगैरह सब कुछ लेकर आ गया. But even now, most of your crypto cases, it will end in Binance. I mean, people who are there from cybercrime here, are you registered in the Codex platform? Whoever handles cybercrime cases? Okay. Okay. So most of the crypto cases, okay, that we have seen, क्या होता है? मैंने पहले चीज क्या बोला था? What will the scammer try to do? If he's having one Ethereum, can he go buy a house now? Can he go buy his food now? एक Ethereum है उसका wallet पे. Exchange करके fiat currency हाथ. Fiat का मतलब INR नहीं तो US dollar. He has to get that. नहीं तो he cannot survive. Right? Till now I cannot go to a shop and give Bitcoin and buy something. I'll have to exchange. So somehow this guy will come and touch an exchange. Many a times it has been Binance. A lot of Indian scams that have been done, that the scammers have tried to offload the funds through Binance's P2P. The last 2 years, I'm not sure if there are a lot of cybercrime officials here. Most of the cases you would have seen will be from Binance P2P that has happened. क्या करते हैं scammers? Binance में P2P is another way of exchanging. उसमें क्या होता है? Generally exchanges कैसे काम करते हैं? If there is a buyer, he wants to buy 10 lakh rupees of crypto. He has to transfer the 10 lakhs to the exchange's bank account first. Seller, if he wants to sell 1 BTC, he has to transfer the 1 BTC to exchange's wallet first. Then they will put the trade और उसके बाद हम exchange करके दे देते हैं दोनों लोग को. Escrow जैसा काम करते हैं. P2P में क्या होता है? Seller will get the Bitcoin and keep it in the exchange. Buyer क्या करते हैं? वो 10 lakh rupees seller को directly उसका बैंक अकाउंट को भेज देते हैं. Exchange को send नहीं करते. The buyer will send money directly to the seller in P2P. Person to person. इस पे बहुत बड़ा difference क्या होता है? When he is sending the rupees to exchange, what we will do, we will check where did the money come from. वो register करने का समय वो एक बैंक अकाउंट देते हैं. हम वो बैंक अकाउंट को भी वेरीफाई करते हैं. Is it from the same bank account? अमाउंट बहुत बड़ा है तो क्या करते हैं? हम EDD करते हैं, enhanced due diligence करते हैं. But when it is transferring from person to person, a general person doesn't know all these things.
He will not check where the fund is coming from. Is it from the same name? So scammers ये तरीका use करके वो job scam का चल रहा है. वो fund ऐसे ही transfer होके क्या हो रहा है इधर एक seller है वो genuine बंदा होता है. उसके पास एक एथीरियम है वो genuinely उन्होंने buy किया था. एक इंडियन एक्सचेंज से buy किया था. P2P में वो एक listing देख रहा था. समझ लीजिए एक एथीरियम का वैल्यू इन द करंट टर्म्स $2,500 है. But in the P2P, the buyer has put a listing. I am ready to buy one Ethereum. Normal इंसान क्या करेगा? He wants to make money. He will go sell it there. अभी from the perspective of police, आपको क्या दिखेगा? Scam funds went from here to the seller's bank account. So the seller is the culprit. Let us take money. He has to return the money. But इस whole issue पे क्या हो रहा है? वो seller है, वो भी victim है. Even he has been victimized. उसको पता नहीं था ये scam funds है. Right? So most of these scams, I'm pretty sure a lot of people have come across job scams, which have been converted into crypto. Everything would have been like this. So the main thing here is, a lot of these people try to use non-KYC exchanges to offload funds. But having said that, most of the major exchanges, even worldwide, they are taking some form of KYC. Right? And many a times, the scams that we are seeing in India or from India, or either Binance, OKX, OB, like this, there are some 10 exchanges, I'll give you the list even. इसी exchange को ही चल रहे हैं scams, right? They are taking the funds there and trying to offload. Now, why I started saying this, the Codex platform is a platform wherein a legal entity like police or enforcement directorate or any of the legal entity in the country can raise a request to Binance. If you send a mail to them, they will not act. You will have to register in the Codex platform. Anyone who's involved in cases, solving cases, अभी जाके आप Codex पे register कर लीजिए with your official ID. Right? There is a process. They will take you through the process. Only in the Codex you can raise something to Binance. Only then they will act. Right? Binance is actually giving data. आपको बहुत सारी cases actually solve हो जाएगा. Right? So it is very simple. They will also help you out. Please go register in the Codex platform. KODEX. सर क्या होता है कोडेक्स प्लेटफॉर्म में वेरिफिकेशन के लिए 1 week to 10 days लगता है. समझ लीजिए आपके पास एक केस आ गया and now you are waiting for 10 days to get the data from them. So time is very important here ना सर. क्या होता है scammer will try to offload his fund and quickly go out of even Binance. वो Binance से क्रिप्टो लेकर बाहर जा गए तो your case becomes even tougher. वो बाहर का है, इट्स अ कंपनी, इट्स अ जनरल कंपनी, डिसेंट्रलाइज नहीं है, सेंट्रलाइज कंपनी है. वो कोडेक्स प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, सिर्फ ये क्लाइंट और लीगल एंटिटीज को कनेक्ट करने के लिए एक टिकटिंग प्लेटफॉर्म है बस. वो फ्रेश डेस्क से जैसा नहीं तो जोगो जैसा एक टिकटिंग प्लेटफॉर्म है. वो टिकटिंग प्लेटफॉर्म पे क्या है, वो सिर्फ लीगल एंटिटीज को अलाउ करता है. अभी मैं जाके रजिस्टर, मैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज रन कर रहा हूँ, मैं जाके उस पर रजिस्टर कर नहीं सकता हूँ मैं. Like complaint, I mean, मैं ऐसा register कर सकता हूँ that you can raise a complaint to me. I cannot raise a complaint to Binance from that. Only a legal official can raise a complaint to Binance from that. Correct. Correct. Correct, sir. That is a, you can आप directly Binance को लिख के भी आप data मांग सकते हैं, but this is the fastest route. So Binance data दे रहे हैं. Right? वो पहले ये issue चल रहा था, Binance से data नहीं मिल रहा था. तो केस सॉल्व होने के लिए कुछ डेटा ही नहीं मिल रहा था. बट बाइनेंस डेटा दे रहे हैं अभी. इन द लास्ट 1 year दे हैव बीन गिविंग डेटा. अ लॉट ऑफ पीपल हैव सॉल्व केसेस. आपको कोई इश्यू उधर हो रहे तो भी I4C है ना, यू गाइस नो अबाउट I4C, राइट? इंडियन सेंटर फॉर साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन, दैट इज द सेंट्रल बॉडी व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन कैपेसिटी बिल्डिंग. So please reach out to I4C if you're facing any trouble in Codex registrations as well. Yeah, number 4C. I mean, any of your higher officials will know.
Okay. Now, I will have to spend a lot of time on investigation, right? Have you had any sessions on investigations before? Okay. The first major thing in an investigation is finding up बैंक में कुछ स्कैम हो रहे थे, यूपीआई पे कुछ स्कैम हो रहे थे, क्या करते हैं? मनी का ट्रायल पकड़ते हैं, this account to this account to this account. Just like that, we have to find the crypto trail here. इसी एड्रेस से इसी एड्रेस गया है, इसी एड्रेस से इसी एड्रेस गया है बोल के. To find that trail, what you have to do is you need to know which website to use, right? If the scam has happened in Ethereum or ERC20, like USDT there's a very, I mean, see, if anyone has got a doubt in any of the cases you're handling, even please reach out. Because for example, USDT coin है ना, वो Ethereum पे भी है, और एक और chain, Tron बोल के एक chain है, lot of scams are happening on the Tron chain as well. Tron में भी वो USDT है. So it will confuse you a bit, okay? First try to understand कोई भी victim आ रहे तो scam कौन सी chain पे हुआ है वो बता दीजिए, बोलिए, पूछ लीजिए उससे. He will say Ethereum पे मैंने भेजा था, नहीं तो Tron chain पे भेजा था. Take that. And if he's saying Ethereum, we will go to this Ether scam, first one. If he's saying BSC chain, Binance chain बोलते हैं, we will go to the second link. So for each chain, I have given a link that you'll have to start your work in. अब इस chain का क्या फर्क पड़ता है? Now let's example, I will open this Ether chain, Ether scan. Why is it not ending? End कर रहा हूँ फिर भी कर दिया. Okay. Now in this Ether scan, let's consider someone has come to you saying that सर मेरे से स्कैम हो गया और इसी एड्रेस को मैंने भेजा था. वो एड्रेस का डिटेल ले लीजिए वो विक्टिम से, and you will try to put that address here. Like for example, if this is the address, I don't have an example address, so I'll just ठीक है. इंटरनेट बहुत स्लो है इधर, आई एम नॉट एबल टू वेट. Okay, see, इसमें क्या होता है, you'll have to take the address, put it here and search. Okay, when we search, I have an example here. Okay, very good. So when I search for an address, I will get a page like this. Now इधर है ना ये transaction as, ये होता है just like in your bank transfer URN number होते हैं ना, reference number, URN number. Just like that, this is a unique ID. ये transaction as डाल के भी आप search कर सकते. You can either put if you put the address, all transaction address will show. If you put the transaction hash, this particular transaction detail you will get. So what has happened from here to here, this is a complex transaction, I'll explain later. From this to this, 32.1 Ethereum. Can you see this? It is a bit blurred. 32.1 Ethereum has been transferred. And ये सब वगैरह तो useless है. This is just transaction fee. Transfer करने के लिए $20 of fees लगा था. Right? But main चीज क्या है इसमें? From to. In most of the cases, we want a simple transaction hash where the from and to will show only one address. But if we make your life simple like that, then the scammer will get caught. So you will find in some cases where there's a contract here there, और उसको नीचे from or to ऐसा लिखा होता है. Go to always the to that is written. This is the beneficiary address. वो address आपने click किया तो उसके बाद उस address पे क्या क्या transaction हुआ है वो पूरी transaction आएगा. So what you have to do, ये 32 Ethereum इसी address से इसी address को गया था. उसके बाद ऐसा भी हो सकते हैं that he split it into 10 more address. Now you have to make a complete Excel mapping this.
usually we map like this. ऐसे map करते हैं हम. From this address, it went to 1, 2, 3, 4 addresses. From here, this fund went to this exchange. From here, this fund went here, and उसके बाद hop होके इधर गया. So you'll have to create a model like this. Either आप straightforward case है तो आप easily बना सकते हैं by using only the explorers. Most of the times straightforward होगा, but ऐसे भी case होगा that there is someone is a very very good mastermind criminal. इतना easy से आपको मिलने वाला है. Okay? In that case, you will have to spend a lot of time in front of Excel and do it. और tools है, chain analysis बोल के एक tool है, TRM Labs में tool है, Merkle Science वो Indian company है, एक tool है, ये tools use करके हम ये solve कर सकते हैं, but these are all expensive tools. So it depends upon your state and the central. I4C is actually in the final discussion of buying a tool that you all can use. But only your higher officials will know in what stage it is. A tool will simplify the life क्योंकि ये सारी चीज आप Excel पे डाल के करने का है तो थोड़ा time लगेगा, but currently that is the solution that is available. So an analysis like this, can someone say what is the objective of this analysis? Analysis का objective क्या है? कब रोकने का है? We have to stop this analysis at some time. When do you stop this? When do you stop saying that from this address it has gone to this address, this address? When do you stop this analysis? When it touches an exchange, आप ये analysis stop करने का है. How will you know this address is an exchange address or not? In Etherscan or in these explorers, in few instance, in 20 to 30% of addresses will be marked correctly as an exchange address. If 100 addresses are there of an exchange, 20 of that might be marked as either Binance or everything. There you will be lucky to get it. Or if you notice there is one address which is having some 1,000 inputs and 1,000 outputs, mostly it will be an exchange address. Right? A scammer cannot do that big of an activity. Okay. So if the address has got too many inputs and outputs, it is of an exchange or an entity. How will you identify which exchange or entity? Write to Indian exchanges. I'll give you the details of Indian exchanges. Write to all the Indian exchanges. हम क्या करते हैं? पहले हम check करते हैं if it is part of my address list. नहीं तो भी हमारे पास tools है वो. उस पे check करके हम आपको बता देगा that which exchange it is, so that you can reach out to Binance or OKX or something. That help will do it too. So any address where you're finding a trouble, please reach out to an exchange. Right? I will be happy enough to help you from Geota side even. Even if there is someone else, some contacts you have in any Indian exchange, reach out to them. I'll also give you all the support contact details. Only by making a graph like this and identifying when it touches a exchange, हम ये case solve कर सकते हैं. And sir, I was just highlighting it to everyone. There is this platform called Codex, which is the platform through which we can raise a complaint in Binance. I think even OKX is part of that. Coinbase is also part of that. They all use this platform as a ticketing system to get complaints from LEAs. But only LEAs can go register in that platform. They will not allow anyone to go register in that platform. Only cybercrime officials or any government official can go register in that platform. In their course of investigation, definitely they will have to reach out to Binance in at least 70 to 80% of the cases. And Binance will be very fast only when you are through Codex. So you'll have to register in Codex first. All the cybercrime officials can create even multiple accounts. Anyone who's in cybercrime team can please go and register in Codex platform with their official ID. No, sir, it is considered like a platform, not just crypto. Worldwide, it is they have clients as even other places, other industries, which they use it like a common, like a fresh desk it is, sir, where it is more like a ticketing system. That is it. It is a ticketing system between both these two peoples, where to
वो safety रखने के लिए it is allowing only government officials to be part of it and not any individual to be part of it. And it is also recommended by I4C to do this. Sir. This platform is a separate private entity who runs this. It's a well-renowned product, sir. Not just for crypto industry, most of the industries use this. So that's why I'm saying even I4C recommends doing this, sir. So that is the best way to solve quickly a crypto case. Okay. You can show that platform. Yeah, I'll show the link, sir. So मैं क्या करता हूँ? Actually, I'll ask someone from I4C to send you a process link to register in this, right? क्योंकि even I have not completely gone and seen it क्योंकि मेरे को access नहीं है इसमें. I know the first initial 2 step, उसके बाद क्या क्या पूछते हैं मेरे को पता नहीं है. लॉगिन है और रजिस्टर का ऑप्शन नहीं है क्या उधर? या डायरेक्ट डैशबोर्ड पे नहीं दे रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए। एक मिनट मैं कोडेक्स पे चाहता हूँ. Site is, I think, Codex Global or something. Yeah. It's not just KODs. I think it's Codex Global. Or I can go to directly Binance का. हाँ यही है. तो इसमें मैं क्या करता हूँ? आई थिंक इट्स बेटर मैं एक पीपीटी नोट जैसा देने के लिए बोल देता हूँ फ्रॉम I4C डायरेक्टली सो दैट स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन होगा rather than me trying to show something which I don't know fully. I think that is better to do. Yeah. Okay, now in the interest of time, I will take questions. So questions to me or questions to Prashant, please let us know. We'll take questions from now. सर ऐसा कर नहीं सकते सर. आपको सर हम भी क्या बोल सकते हैं? आप एक एड्रेस दिया तो वो किसी एक्सचेंज का एड्रेस है तो नहीं वो बता सकते हैं. हम ये नहीं कर सकते दैट ऑल बिनांस एड्रेस क्योंकि वो बहुत सारे एड्रेसेस होगा. लाइक इफ आई एम हैविंग मेरे पास 1 मिलियन कस्टमर्स है एंड आई एम सपोर्टिंग सम 300+ टोकन्स उसमें चेन्स तो 10 चेन होगा. So every customer at least 10 addresses I'll have to give. Okay, so 1 crore addresses I myself have. Binance has got somewhere around 10 crore or 12 crore, I mean 10 crore or 15 crore customers maybe. Right? So they will have even big address list. And apart from this, internal management के लिए भी हम बहुत सारे addresses रखते हैं for safety. So getting the complete list और वो secure भी नहीं है exchange के लिए, they will not share easily भी. बट आप ये कर सकते हैं आपका वो एनालिसिस का टाइम पे आपको पता होने का है दैट यू आर सडनली फाइंडिंग एक एड्रेस है बहुत सारी इनपुट और आउटपुट जा रहा है आपको डाउट आ गया अभी ये तो एक नॉर्मल एड्रेस नहीं लग रहा है बोल के उसी टाइम रीच आउट कर लीजिए. राइट नाउ जनरली इवन आपको कुछ इश्यू है किसी केस सॉल्व करने का टाइम जनरली इवन यू कैन रीच आउट यू नो आई डेफिनेटली विल हेल्प यू आउट but especially if you're doing it yourself or आप बीच में you're finding something like this, please reach out. Please reach out. We can definitely help you out there. How is products taking profits? They will take it from the exchange side. From the client side, they'll take money. Yeah. So how crypto exchanges are registered in India? Listed in? Registered in India. Okay. Now, okay, that's my contact. I just thought if anyone has got an issue. Okay, so there are
two major things. Is crypto regulated in India? Yes or no? Is it regulated? Not regulated. Is buying, selling, holding crypto then illegal in India? It is not illegal. So it is okay to hold, okay to buy, okay to sell. If someone has not paid tax for all that, then tax law will apply. Criminal law will not apply. Tax law will apply. Okay? But regulations nahi hai. Can you name one more product that you use on day-to-day basis where there is no regulation? Up day-to-day nahi, second to second hai. Mobile. Yeah. इसपे क्या है? Lot of things that you use have artificial intelligence in it. और AI का regulations पे क्या चल रहा है? Still it is waiting frame. But AI has been utilizing the data being worked upon for quite some time now, right? And we are still trying to frame the laws for AI. So what is the first thing about technology? Technology has to create problems first, right? It has to create such a good problem that someone will spend time in the government to go regulate it. And crypto is such a good problem. Okay, so regulations will come. Now, if you've seen, tax laws have come. And the next major thing, crypto entities are under FIU now. Up recent notification dekha FIU se, where they sent a notification saying almost 9 international exchanges, where Binance is also part of it. They sent a notification saying if they don't come and register with FIU, they will be blacklisting their address, their IP or their website address. They've actually already sent the communication to MeitY. It is a matter of time that these exchanges will be blocked from India. But if they reach out and they quickly discuss with FIU, people can still access it, right? Exchanges are registered under FIU. FIU is the Financial Intelligence Unit. This is particularly to handle money laundering and terrorist financing, right? Just like how banks coordinate with FIU, exchanges, we keep coordinating with FIU. We submit reports. There are a lot of confidential things that happens between FIU and exchanges. And there's a lot of exchange that happens, especially to control money laundering and terrorist financing with the use of crypto, right? Now, there was a list that was put up as one of the questions in Lok Sabha, where someone has asked if there is any registration for exchanges. For that, the government has replied saying there is no regulatory registration yet, but this is the list of some 30 or 31 list was given who are part of the, who have come and registered with FIU. It's a publicly available document even, which you can see even. Right? We are also one of the people, one of the earlier people who are part of the committee who framed all this, who are part of FIU like that. 30, not just exchanges. See, if it is crypto, इसमें और भी players है, wallet service providers है, ऐसा कुछ players है, not only crypto, NFT marketplace है. Regulations, crypto के लिए कुछ भी regulation नहीं है सर, सिर्फ FIU का registration है अभी. FIU, so MetaMask वालों ने अभी तक FIU पे register नहीं है. And as a matter of fact, MetaMask does not collect any data about people who are using their MetaMask software. Consider it as an open source. They don't even collect IP address details. Beach May, they wanted to collect IP address details, but there was a big backlash and they stopped doing that. So you will not get any details apart from already publicly available details from MetaMask. There is an organization called MetaMask which you can reach out, but they will have no data. This product what they build is an open source product. Yeah. And most of the
people wallet they will use will be either exchange wallet, नहीं तो like sir said MetaMask, trust wallet भी है एक. These are the common used wallets. Wallets is a big section. I think someone would have taken you through the wallet section. If not, that is when you can understand how to solve a case. So usually, I'll just maybe before I take a question, one important thing I'll say. Does anyone know, like if you go to if you catch a criminal, right, and you find that he is having 10 bitcoins, scam funds, how are you going to take that into custody? Can someone answer to this? Any idea? Anything is okay. This is very, very important. Okay. Okay. Now no, but you caught scam funds. He's bound to say I mean, he can say I forgot. Okay. What if you find the private key when you're searching? आप सर्च कर रहे हैं और आपको एक चिट्ठी मिल रहा है, वो तो आप डाल के देख रहे हैं, हाँ वो प्राइवेट की है और उसके अंदर 10 बिटकॉइन है. अभी क्या करेगा आप? प्राइवेट की मिल गया. Now what to do? Actually, yes. Actually, yes. So I'll explain to you. So there's this incident that happened in UK. There was this guy who was caught. Okay, एक scammer था. उसको पकड़ लिया. And police had also got hold of his private key. पुलिस ने क्या किया? अच्छा से एक फाइल बना के तो प्राइवेट की भी उस पर रख के केस क्लोज कर दिया. फिर वो बंदा ने क्या किया? वो प्राइवेट की उसको भाई को भी दिया था. And what did he do? He took all the cryptos out of that address and transfer it out. So it doesn't mean anything that if we are holding the private key. When we hold a private key, what it means, we have the power to transfer it out of that address. We cannot keep it safe because किसी और के पास वो private key है तो वो भी उसको withdraw कर सकते. So usually what is suggested, there are two ways. You can maintain your own wallets as police entity for your divisions, or you should create an SOP wherein you can maintain your own wallets, and whenever there is any recovery that is happening like this, you have to transfer it to your own wallet. Now what is the challenge in this? आप खुद ही wallet maintain कर रहे तो police job is like that we can never say that this person is going to be here forever. He can get transferred, right? Now the key has to be safe. If you lose the key, क्या होगा? Nothing can happen, and all the onus responsibility comes on the department, right? There is hardware wallet. Hardware wallet where even their key is important, but if it gets corrupted, then using that key you will have to retrieve it back. So key management बहुत important चीज है इसमें. The second solution is the police officials, they get into an MOU with exchanges like us. We get into an MOU wherein you can transfer the funds and hold it with us, and you can also say liquidate it, right? इसमें issue क्या होगा? It is a very volatile asset, right? When you recovered, the value will be 10 lakh rupees. By the time you went to the courts, it would have become 10 rupees. Who will bear the responsibility now? Even when you, even when you stake, the value of the asset, if it goes down, you will get staking reward. Like you will get, for example, I staked Ethereum, I got staking reward. So let's consider as a police official, you went and staked in Binance. It's okay, you can have an MOU with Binance even. Nothing stops. Now when you go stake, it doesn't mean that, so let's consider this, sir. Staking is something like I bought a gold, but the gold is simply lying with me. So for that, what I'm doing is I'm lending this to someone, lending it as a gold itself. And what is the thing I'm asking in return?
whatever value that is, if I'm giving you 1 kg of gold, you will give me you give me 1 gram worth of gold every day. That is the deal you and I have, sir. I'll give you 1 gram of gold. You can take it as you can sell it and you can use it as a money to finance your business. But when you return it back, you should give me same that 1 kg of gold back. And I should have interest even because I've given you that gold. Interest is every day 1 gram gold interest. Okay, I take it as only gold back. Now, Ismail, let us consider, which doesn't happen at all. Let's consider gold's price became 0 tomorrow. All women in India, they started believing that gold is not big, iron is big. Gold's value goes 0. Now, suddenly what happened? आपने stake किया. 1 kg gold is 1 kg only. आपको 1 gram का interest भी आ रहा है. But suddenly gold of value of gold has gone down. Taking वही होता है. The principal value has gone down. See here, you don't want to take the responsibility of price. I will not take the responsibility of volatility. So it is something, it's actually similar to even when you are confiscating something related to stocks, shares. There's similar law which applies, right? Where they ask you to go liquidate. Let's consider the best example is this. So let us consider you caught a truck, which is milk truck. दूध है उसके अंदर, perishable है. What are you going to do? Are you going to keep it in custody? What should you do with it? What should you do? Yes. So you will have to perishable disk, you have a law. Consider it a volatile asset should be considered like a perishable dish. Right? And you have to act on it. Or the responsibility will fall on you. Something like a USDT is still okay. US dollar ka price utna nahi change hota hai. But anything other than that is volatile. So I hope there is no more questions left. Okay. To propose vote of thanks, I would like to invite Shri Anshuman Pal, ACP. Dear colleagues and dear friends, and we are all the students here, and our experts are our teachers. So I think we have learned a lot what we didn't know earlier. So a really big thanks to you, to the experts. Now I invite Shri Deepak Gahlawat, Sir IPS, to please come over the stage and present a memento to the guest speakers. To this side, please. Come. Yeah, that's it. Please come down. Now moving to the next part, I would like to call Professor Urmila ma'am to kindly come to the stage and